Okay, good evening, everyone. I hope everyone is doing good. All right, so we have Ola present today. All right, so let me share the screen first before we begin with our class. Okay, so before we begin our class, can you please, everyone, raise your hands? Those who can hear me: Rahul, Srikant, Gaurav, Harishat, Ketan. Okay, can you please introduce yourself a bit? तो हमें मुझे एक दूसरे से पहले जान लेते हैं सो दैट आई कैन नो कौन से लेवल पे हमें एक दूसरे को एक्सप्लेन करना है ऑलराइट यू कैन स्टार्ट विद योर yes of course you can start with your name and some basic information are you working or non-working all right like okay Uh, yes, Bharat, I am starting with first. let's I go. have experience of 9 years, and the 4 years experience is the SD-WAN technology for the BT project. And with the 6 year, I have experience in the SCL technology as well for the AT&T project and Verizon. And before that, I have just started my work lifestyle with the job with the physical connectivity of routing, switching, and WAN connection from the ISP, and switch to switch connectivity and configure the dynamic IP address and all the things Mm-hmm. with the previous 1 to 2 years. Then I have selected for the SCL Comnet Limited for the network operations center for the L2 level. In the L2 level, I have configured the BGP OSPF, configure the static routes, default route towards the SP sometimes, and sometimes checking the DC to DR replication links. When DC is down, the uh, link is just forwarded to the DR, and we need to just when the DC is up, so we need to migrate the all traffic from the DC. And in the switching part, I have done the port security part, and I have done the trunk port issue. I Mm-hmm. have checked, and I have just tagging the trunk port VLAN, and we have configured the HSRP for the router. When one link is down, then the other automatically take the virtual IP with the different subnet. This is the SL Comnet Limited experience, and same experience in the Nokia, AT&T, and Verizon. Mm-hmm. And for the SD-WAN technology, I have just migrated the 50 to 60 site of the ISP migration for the Nokia Novas for the premium, basic, and standard. For the basic, there is a one link connected on the NSG, and the standard one is the device is one, but there are two link configured on the NSG, and the premium side is like that. One is connected with the uh, router one, and second one is connected with the router two, and this will be connected with the failover testing for the shunt connection is connected between the core switches of the SD-LAN switches. And there are two type of site here. One is the SD-LAN, one is the non-SD-LAN. We need to check with the customer which one is the SD-LAN, which one is the non-SD-LAN. So I have migrated more site here. There are 50 site if I have just suppose, then the 99% success rate of the ISP migration. And in GuiNet, I have done the SD-WAN technology learning, and I have done the Palo Alto firewall as well. Palo Alto is running going on, and we are working on the Panorama, but I haven't joined the class from the last 1 week due to the lots of load on the on my Okay, I head understand office side. by Okay. the BT project. Okay, no worries. If you have if you have started with the आपने पालोल्टे का कोर्स अटेंड कर रहे हो हाँ 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 वो बहुत ही अच्छा है क्योंकि हर एक अलग अलग लोकेशन पे जो रिक्वायरमेंट होती है हम्म लाइक प्राइसिंग वाइज एंड सो ऑन तो
नॉट ओनली द प्राइसिंग बट कौन से फीचर्स आपको कौन से वहाँ पे यूज करने, तो फायरवॉल के ऊपर डिपेंड करेगा यार। तो ये ऑफ कोर्स आपको अगर सारी जितना मैक्सिमम फायरवॉल आता हो तो इतना इजी रहेगा। अगर आपने ओके, जस्ट इफ आई एम नॉट मिस्ड, आपने अभी तक राउटर स्विचिंग पे काम किया है, कोई फायरवॉल पे राउटर आप? स्विचिंग SD-WAN एंड फायरवॉल पे मैंने काम नहीं किया है, बट हम्म, व्हेन आई विल गेट इट द चांस फॉर द इंट्राजोन इंटरजोन to हम्म, define the some like IP address policy, giving the policy on the intrazone interzone, so I will do it very well. So I know it very well with the help of Pankaj sir. Pankaj sir is the giving the best example, and with the live environment giving the such lab to do the same. So so IPS IDS is there, like here filtering is there, data filtering, content ID, user ID, I know it very well, but I need to focus again, because with the parallelly working with the office time, we haven't a time for like every time to read all the things and recap the videos. So ओके। this is the problem, and we are managing with the Abhishek sir for this Sophos videos. When I will get it, then I will be active in the Sophos firewall as well in the current live classes. What means after this course, what you will do is like you can deploy the Sophos firewall जहाँ पे भी आपने routers deploy किए होंगे, Mm-hmm. ठीक है, सेम चीजें आप Sophos को यूज कर सकते हो फ्यूचर में। आप Okay, okay. उससे पहले जो आप आपकी करंट टोपोलॉजी आप काम कर रहे हो, सेम टोपोलॉजी आप यहाँ पे जो आप लैब्स परचेज करते हो, राइट, तो वही लैब Mm-hmm. पे आप सेम सिनेरियो क्रिएट करो, वहाँ पे एक बार पालोल्टो रखो, उसके बाद आप Mm-hmm. सोफोज रखो। Mm-hmm. राउटर्स तो आपके पास ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, राइट, सिस्को के राउटर्स Yes, yes, में, yes, करेक्ट? सो yes. ऐसे करके FortiGate है, जितनी भी फाइल्स आप रिप्लेस करके आप पूरा यहाँ पे वर्चुअलाइज करके फिर उसको लाइव में ले जा सकते हैं, प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में टेस्टिंग करके, टेस्ट करके, राइट? Yes, तो I want to say one thing here also. For the BT project, I am working as a technical designer for the SD-WAN technology, and I am working L3 plus here actually. But my salary is very low, so I have joined the many course with the GuiNet, so I can just improve my salary with like 30 plus and 35 plus. So I'm doing every day my effort with the knowledge of the different technology. If when these are the collected by in mind, then I will just grab the opportunity of a better company in the यस, future. इट कैन, ऐसा भी हो सकता है, लेट्स से कोई फावल के ऊपर हम वी नो, हमको उसके बारे में ज्यादा यू हैव टू लर्न नॉट ओनली द कॉन्फ़िगरेशन, राइट, कॉन्फ़िगरेशन तो Mhm, आपको डॉक्यूमेंट्स में ही मिल जाएगा, बट मेन mhm, चीज होता है कि जब आप लाइव में डालते हो, लाइव नेटवर्क में डालते हो, जब आपका नेटवर्क ग्रो करता है, mhm, राइट, तब कैसे वो फायरवॉल को, या फिर ये ऑफ कोर्स कोई भी फायरवॉल, मैंने सोफोस की बात नहीं कर रहा हूँ, बट कोई भी फायरवॉल हो उसको कैसे मैनेज करना है, राइट, डे टू डे कैसे इश्यूज आ रहे हैं तो उसको कैसे मैनेज करना है, वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सो यस ऑफ कोर्स, जो मैं यहाँ पे सोफोस फायरवॉल सिखाऊंगा वो आपको टेक लेवल का भी ट्रबल शूट सिखाऊंगा, कि आपको जो अगर हार्डवेयर इशू है तो यस ऑफ कोर्स हमें फिर हम सब सपोर्ट लेंगे सोफोस का, यानी जो भी वेंडर होगा हम उसका सपोर्ट तो लेते ही हैं। mhm, बाकी तो बेसिक कॉन्फ़िगरेशन और बेसिक ट्रबल शूट और एडवांस ट्रबल शूट में भी लोग अगर मांगते तो सब हम प्रोवाइड करेंगे यहाँ पे। सो वी विल अंडरस्टैंड नॉट ओनली दी फावल, बट जो mhm. फावल के साथ जो टेक्नोलॉजी जुड़ी हुई है, राइट, लेट्स से अब अभी हम प्रोफाइल पढ़ने वाले हैं, लेट्स से डिस्क्रिप्शन प्रोफाइल, यहाँ पे हम ट्रैफिक को एनक्रिप्ट डिक्रिप्ट करते हैं, यानी हम उसको स्कैन करेंगे इवन दो इट इज अ सिक्योर कनेक्शन, जो HTTPS होता है, राइट, सिक्योर SSL, I'm SSL correct if yeah. या SSL TLS, ये जो ये एक ही टेक्नोलॉजी, एडवांस मींस इम्प्रूवमेंट हुआ है ये सब फोर्स, बट हाउ सोफोस फाइवल से, यानी एज अ मैन इन द मिडल वी विल अंडरस्टैंड दिस टेक्नोलॉजी, क्योंकि नॉट ओनली द TLS, ओके, सारी टेक्नोलॉजी इंटीग्रेटेड होती है कोई भी फाइवल पे, एंड वी कैन यूज दोज टेक्नोलॉजी, दैट इज द रीजन वी स्टडी दी TLS एंड SSL, ये इसका एनक्रिप्शन सेटिंग्स, जो फायरवॉल कैसे काम करेगा उससे हमें और आइडिया आएगा। दोज हु आर, यस आई अंडरस्टैंड, सम आर न्यू हियर एक्चुअली, तो वो भी, उनको भी पता चलेगा, यस ऑफ कोर्स इफ दे हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू दोस टेक्नोलॉजीज दे विल अंडरस्टैंड हाउ दे आर इम्प्लीमेंटेड इन रियल लाइफ सिनेरियोस, कैसे हम उसको
यूज करते हैं यहाँ पे, एंड हाउ इट वर्क्स, कैसे चैलेंजेस से आते हैं, कौन कौन से हमें चैलेंजेस को ओवरकम करना है, फिक्स करना है, एंड सो ऑन। सो Yes, ऑन। sir. Yes, sir. I understood your point. Tomorrow is one migration of like Cisco SD-WAN from the 5:30 p.m. to 9:30 p.m. So I will be not in the class, but what can do? I can just stand by with the joining the this call, because I have taken a lots of work, because when I am giving the 100% output to company is giving the more work to me drive No. the migration. So don't mind if I am not available any class or any next class. And what can I do? We can manage the video by the Abhishek sir. When I will get it, then the Saturday Sunday will thoroughly check all the video, and we taken a points where I am stucking, Mm. where I am stuck. So I will just speak with the different class for the all videos related to. No Okay. worries. You can gather your doubts. Okay, jot it down. Yeah, yeah. And within the course or end of the course, or if you have any special topology that you are trying to configure, or you need Mm-hmm. any help, Mm-hmm. if we are establishing Sophos products, okay, particular Sophos product and ecosystem for the Sophos, you can definitely contact me for that if you have any doubt. In Mm-hmm. the class, you can discuss anything there, so that other those who are completely new, who are just wants to start their career also, they can start from here. Right? So we can Sir, just one question in this also, with the Sophos file, this is working as a router or SD-WAN technology also in built in this product, yes, SD-WAN router. yes, Okay. all the features are available. You can say SD-WAN, or you can say even WAF, or even have some functionality to load balance your servers. You can Mm-hmm. fail over IPsec connections, MPLS Yes, connection. this is a HA. You are saying that active, 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 passive also is HA, there. HA is also available. Yes, of course, that is so. Okay, okay, okay. We will Understood. we will configure that. We will understand how HA works, how we can let's say if some another device is getting failed due to hardware failure, how Mm-hmm. we can replace that device, how we can restore the backup back, how can make that inactive active or active passive scenario back to the prevalent once we have received the device. But before that, we will understand what is HA, what is hybridity, how traffic is load balance, how the Mm-hmm. failure would take place from one device to another device. Okay, here, if those who are listening, HA means two Sophos firewall Mm-hmm. are combined together. All right, Yeah, yeah, so yeah. With the active, active, with the active passive, and the traffic is with the load balancing for the active, active. For the active passive, yes. traffic is going with the one. If one is the down, then second one is the active now. Yes. So configuration would be very simple, and also troubleshoot will be very, very simple for you once you have gone through this course with me. All right. Okay, okay, understood, understood. I need to know one thing here also. If you do the packet level troubleshooting, like in the routing switching, I know it very well. There is a wire shark is there. So I just need to know the source, destination, type field, Mm, protocol number, and mm. ARPA request and ARP request, all the things from the layer 3 to layer 1, how to packet flow. If you have any extra class, so you can just conclude the packet level troubleshooting. हाँ, ये दिस इज फॉर ऑल एक्चुअली, यस, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन फॉर यू। जो पैकेट कैप्चर है, ठीक है, उसी से हमें पता चलता है ट्रबल शूट करने की। तो हम एकदम जो फावल से पैकेट कैप्चर है, मैंने वो कल स्टार्ट कर दिया था। कैसे हम Okay. पैकेट्स देखते हैं, कैसे इन आउट होता है, कैसे फ्लो होता है, और क्या और भी डीप लेवल में जाएंगे जैसे जैसे मॉड्यूल्स आगे बढ़ते जाएंगे हमारे। और ये ऑफ कोर्स Mhm. इट इज नॉट लिमिटेड टू फावल। ये ऑफ कोर्स वी कैन, जो पिकअप लेते हैं हम फायर शॉट में, वो भी हम ले सकते हैं। So not only Okay. that, we will check from SSH, we will check from GUI, and also we will check the packet flow on the Wireshark as well. Yeah, sure. Thank you so much. Okay, yes, of course, I understand that that will help you to understand which the neighbor is causing the issue, or firewall is causing the issue, or your Mhm. upstream or downstream device which is connected to firewall may have issues or not, or maybe it is server an issue or the client an issue. So
how we can identify whether it is issue from the firewall side, or server side, client side, or neighbor routers, switches. Only packet flow can help us to get those details, right, Gaurav? As you know. So from Sure. firewall, yes, of course. Let's say if you don't have, मैं आपको यहाँ पे यही दिखाने वाला हूँ कि जब अगर कुछ इशू आता है तो फायरवॉल पे कैसे देखना है, कैसे वेरीफाई करना है कि यहाँ पे इशू है कि नहीं है, अगर नहीं है तो कैसे नेक्स्ट होप या फिर नेक्स्ट जो हमारा डेस्टिनेशन होगा उस पे कैसे वेरीफाई करना है इशू है कि नहीं है, एंड कैसे हम इसको फिक्स करेंगे, अप एंड रनिंग कैसे लाएंगे विद इन SLA टाइम पे हमें रिजोल्व करना है। SLA टाइम जिनको नहीं पता, ये ऑफ कोर्स 1 आवर का होता है, 30 मिनट्स का भी होता है, 1 आवर का होता है। वी हैव टू रिजोल्व दैट इशू विद इन दोज पीरियड ऑफ टाइम. So we'll see that. Okay. Thank you, Okay, sir. so Thank you, sir. some are working, some are only just attending the course. But those who want to just introduce yourself, you can unmute and just introduce yourself. Those who don't want, then we will begin the session. That's fine. Sure. Okay, so any other anyone want to just introduce yourself, then it would be great. Otherwise, it's fine if you're shy, it's fine. Okay. All right. So no worries. You can let me know whenever you are ready to introduce yourself. We will start some introduction so that मुझे भी पता चलेगा. अगर यहाँ पे कोई I don't know how many are professionals and how many are new, but let's say if you are very good in English, okay, आपका English communication अगर fluent है, and if you're looking for a very good job, all right, with the tech support with Sophos Firewall, do let me know. If other person wants to join some companies and looking for the job and has very good fluent English and also in technical background, is having a technical background and wants to join for the job and want to prepare for Sophos के कोई role पे security engineer बनना है और tech support engineer बनना है, you can contact us. And सर you can मेरा एक ड्रॉबैक है यहाँ पे, मैं मैकेनिकल से बीटेक किया हूँ, बट आई डोंट नो द नॉलेज ऑफ मैकेनिकल एनीथिंग. आई नो इट दिस विल इम्पैक्ट विद द CS ब्रांच एज वेल फॉर दिस टेक्नोलॉजी लाइक SD-WAN, Palo Alto, firewall, other computer, you AWS. mean to say computer science? Yes, I'm Yes. not from the computer science background actually. I have done the BTech with the mechanical specialization. If you it doesn't matter until and unless you know the technical stuff. All right. So if you better you do some certification now, Yes, I CCNA, have done the CCNP. CCNP certification in Read the. if possible, read more books regarding to the computer engineering. Go Yes, through yes. them once, and you might be knowing all these things. It's fine. Yes, I have read many things, and I have tried very videos and very books like the packet level forwarding the, like how to echo request work, how to layer 3 work, how to layer 2 work. I know it very well with the packet level with the Wireshark on the routing switching. So I think with the initial day of the SCL Comnet layer, I have a very problem I'm getting, uh, uh, but I did not get now any problem because I know it very well, all the process of networking and firewall. Yeah, that's it. So uh, just keep on learning and just update your knowledge, and just that will do actually. That is Yeah, fine. sure. Gaurav. Yes, Ketan, go ahead. Yes, my name is Ketan. I have 22 years experience in networking. I know routing, switching, security, voice, and storage as well also. And I know this Palo Alto. In my network, I have the Palo Alto, the Fortinet Load Balancer, Fortinet WAF, and I know all this thing. But the Sophos is a new for me. But regarding the technically or whatever the concept or same thing is that for Palo Alto or for a Fortinet. So for me, this is Sophos is just to learn this thing. Okay. Yeah, I agree with you that you will get the same functionality which FortiGate and Palo Alto or any
I think there are many other firewalls have the same functionality like Sonic or WatchGuard and many others. But yes, of course, the only thing is that how how we are capable of handling any of the firewall if in case of any new requirement or in case of any issue, right? That is more important thing. And how which are the features we can use on the firewall, that is also most important. Is of course, as you have very great experience, that would be very helpful for rest of the team also. Thank you, Ketan. Thank you. Yeah. Okay. So okay, so the introduction, I thought let's take some introduction so that I can know rest of the people if they are willing, if they are new to and willing to start their network or want to upgrade on their network, in your career actually, yeah. Then you definitely you can introduce yourself, or not today. It's fine if you are just listening, you are somewhere else. It's fine. You don't need to introduce, but yes, whenever you are free, you can let me know about yourself so that I can help you to upgrade your knowledge. Yeah. Sir, I have a good one suggestion for our teams. Can we make a one group as a WhatsApp group? We can add all the numbers and our team members. Yes, this is the correct option. Actually, I have done with the Palo Alto firewall with the group. Yeah, So we for will. Sophos also it will be good. Yeah, we will create one group. Just allow me some time. You will get a group, and of course, the notes and some links. Okay, regarding the Sophos. All right. And yes, on the completion, you will get the maybe certificate if you pass the exam. Okay, so I will just ask you some questions. You can just give me the answer. Is fine. It is open book. I will share you the notes. You can, if you don't know the answer, you can just go through those notes and you can give me the answer, and then I will provide you the certificate. All right. So there is a software certification is available. We can do the certification Yes, you can like do that. CCNA, CCNP. We can do that, right? Yes, it is possible. Okay. Thank you, sir. We will come on that. Everyone will have, after this completion of this code, you will be like Sophos administrator. All right, Sophos firewall administrator. So you Like can in you like can in Pal like in Palo Alto, there are two certification is that for PCNSA and PCNSE. yeah, in So Sophos like same also. fees. Yes, in Sophos also you have a different level of certification. This is the Sophos firewall administrator. Next is Sophos architectural engineer and so on. Okay. So currently I'm doing Sophos firewall administrator. So after completion of this course, you will be like Sophos firewall administrator. Okay, or not only all the team, all the members right now who is present here. Okay. All right. So yes, Rahul, Ritesh, everyone, you can just update your resume and you can mention about the Sophos firewall administrator, and it might help you, all right, to build your career. Sir, can I ask one question? This is not a technical question. Please go ahead. Go ahead. Yeah, regarding this in India, how much the Sophos are selling, and how this what we say that because in Gulf, I'm working in a Gulf country, because in the Gulf we are not buying the Sophos. People are buying this Cisco Firewire, Palo FortiGate, yeah, Alto, and the Palo, Fortinet. yeah, So Palo Alto. how is the market in India for Sophos? In India, I must say it is very low, but the reason currently actually are maybe many reasons are there. It is not only the price. It was having the price, plus the price was too high after the cheap war. The recent, if you look into the recent years, we have chip shortage issues, right now also might we have the chips, the devices are coming very, if someone orders the switches or routers or firewall, we have a very less possibility to get it on time. So not only that, but yes, of course, in India, for Indians, the
firewall, I whatever feedback I have got till now, the firewall is it's very expensive compared to rest of the firewalls. Yes, of course, I have not gone through the exact price, but definitely as a I was in tech support, so yes, I have gone through the techs, not with the pre-sales, but yes, of course, I have heard the feedback that the reason is they only not being sold, that is the high price, very expensive firewall. So they go for FortiGate or Palo Alto, or even they use a PF Sense and the less cheaper firewall. But when we are buying the firewall, make sure that we get the maximum security from that product. Actually, that is the main concern. That's it. So in India, I cannot say right away what is the status. But yes, of course, there are many organizations, they are using Sophos and also FortiGate. Palo Alto is most popular now in India. But in Gulf, the Palo Alto is very expensive here compared to Fortinet. Fortinet is very good price that they are giving us a good price that Fortinet. So that's the reason they are not going for this Sophos. They are going for the FortiGate only. But for Fortinet, yes, yeah. Go ahead, sir. Yeah. Yeah, but managing the firewall from FortiGate and Sophos both are same. You can use any of the firewall. Yes, this is right. Both. Yes, yeah. And if you look into the Gartner report, let me share, if I can say share something. This is Sophos is an Indian company from Gujarat, right, sir? Ahmedabad, right? They build this Sophos, right? Yes. If I tell about the history of the firewall, it was built by Gujarati. Yes, you might know Hemal Patel. That was the who is the creator of the firewall, and it was previously it was Cyberome. So it was got acquired by Sophos, that is London-based company. And yes, of course, Cisco also want to acquire Cyberome firewall, but finally they have deal with the Sophos. My two brother is working in Sophos, sir. One in Australia, he's in technical team, and one is in software team. He's in UK. Okay, thanks. Yeah, my two brother is working in Sophos company, sir. One in Australia is a technical support team. Before he's working on in Ahmedabad, and one guy is in my friend is in UK. My brother is in UK. He's a software engineer. He's making the software and Sophos. Okay, sounds great. Great. All right, so if you look into the Gartner report, like this way, you will get the firewall. You can see which is the most popular firewall here. So we have FortiGate in the first. You can see FortiGate, then Checkpoint on the second place. Then third place we have Palo Alto series, Cisco, and yes, of course, then we have Sophos. That is, I think, fifth. So ratings, if you look into the ratings, you can see the ratings and feedbacks here. You can compare, let's say if you want to compare Sophos Firewall, if I click on Sophos Firewall, I think you can click compare here, and you can compare with any of the firewall before you buy. Okay, कोई भी firewall अगर आप purchase कर रहे हो. Okay, some are new here, so you can suggest, right, like this way. If you want to compare the firewall, you can compare with, let's say, P series or let's say FortiGate. And let me scroll down. We have other firewalls also. We have Sonicor. Okay, Sonicor T series, Z series. Every firewall is available. But let's compare this four. It's fine. You can compare it, and then you can take decision which firewall you want to deploy it. But before you deploy it, yes, of course, you should be aware about all the modules, all integrated modules that are available on the firewall and their functionalities, how they work, and how we can manage it. Configuration is simple. Configuration to simple, but to fix the issue, to manage the firewall is much more tedious task than the doing some configuration, finding bugs, and so on.
So you can see you can see all the three firewalls with the Sophos firewall. Right? Let's say let me just delete Sonic port. So I can see, yeah, you can compare the differences, like how many reviews they have got. So you can see on the ratings. Okay, so you can see FortiGate quota, what you have इतना rating 2500 above rates मिले हैं, thousands and 18. So it depends on the ratings. Okay, and you can see the highlights. You can see the type of evolution, contracting, development with the firewalls, integrations, service and support. Whose service and support is better, you can see here. So as per the Gartner, I can see 4.64 is for Sophos. All right, so it will make much more easier. Okay, it's growing, so you can use it. Yes. As Ketan has told, in UAE, when I was working with the Sophos, when it was CyberRoam, mostly from the UAE, yes, of course, they were using CyberRoam, but now might they have replaced with some other firewall. So migration, if let's say you are looking for the migration, then after doing this course with the Sophos firewall, आपको जब माइग्रेशन करते हैं, ऑलराइट, और जो यहाँ पे नए हैं उसको अगर माइग्रेशन नहीं पता है, माइग्रेशन यानी एक ट्रेडिशनल फायरवॉल होता है, ओके, यानी पुराना फायरवॉल है, उसको हमको रिप्लेस करना है विद द न्यू फायरवॉल। या हो सकता है सिस्को का आपका राउटर चल रहा हो, सिस्को का ही फायरवॉल हो, और उसको रिप्लेस करना है विद FortiGate, ओके, तो उसको माइग्रेशन बोलेंगे, या फिर पालो अल्टो या फिर सोफोस। सो यू कैन डू द माइग्रेशन विद एनी ऑफ द फायरवॉल फ्रॉम हियर. But yes, of course, we should know how to configure it, how to manage and troubleshoot. We should also know about the firmwares, the hardware versions, कौन से जिस जो हार्डवेयर पे हम काम कर रहे हैं उसके बारे में पता होना चाहिए, एंड ये सब जो फर्मवेयर जो हम रन कर रहे हैं उसके बारे में हमें डिटेल में पता होना चाहिए. कैसे पता चलेगा? रिलीज नोट्स होगी, राइट? सो यू हैव टू लुक ऑन दी रिलीज नोट्स एंड दी हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन जो हम ये class में तो हम करने ही वाले हैं. All right, so you can compare the firewall and you can purchase as per your choice. All right, मैं FortiGate भी use कर सकता हूँ. All right, if my customer is not agree with the Sophos or Palo Alto, I have to use FortiGate, or my customer wants Palo Alto. So yes, of course, we should know some of the firewalls so that we can manage it. Okay, तो Sophos में हम जैसे कोर्स करेंगे, just give me a minute. Let me have the water, please. Sorry. Okay, so as Sophos में जब हम लैब करेंगे, तो जैसे हम Sophos मैनेज करना जब आ जाएगा, alright, maybe you be having a good experience with the rest of the firewall. Some will have, some will not. But you can compare the management of the Sophos firewall with the rest of the firewall. And what are the challenges that comes with the Sophos firewall? What challenges that are coming with the rest of the firewalls, and you can just differentiate it, और उसके ऊपर आप डिसीजन ले सकते हैं कि कौन सा हमें यहाँ पे जाना है, राइट? बट ये सब सारी जो इतनी टेक्नोलॉजी होगी वो यहाँ पे हम देख सकते हैं. सो दोज हु आर जो नए हैं, राइट, सो यू विल लर्न अबाउट जो टेक्नोलॉजी अभी तक सुना होगा. ओके, you will see it here in live action. All right, so we'll begin with the some part of the theory first, and as it is, we will look for 1 hour or maybe 40 minutes. We will go through the theory part थोड़ा देखेंगे, उसके बाद हम lab practice थोड़ा बढ़ेंगे. All right, so कल हमने जहाँ से छोड़ा था वहाँ से हम continue कर रहे हैं. All right, so we have understood the objects, right? We have created objects, IP object बनाया था, IP list किया था. So we will use those objects very particularly today. वो use करते हैं आज. और MAC host create किया था, FQDN, and country host जो default है. Okay, we have a look there कि वहाँ पे कौन से default objects create ऑलरेडी, कौन से वर्जन, जो 18 वर्जन होगा, हो गया फर्मवेयर के वर्जन से 17, 18 और 19,
ये 3 वर्जन्स हैं यहाँ पे। तो तीनों वर्जन्स में अगर आप काम कर रहे हो तो और यू माइट बी यू योर सीनियर्स वुड बी वर्किंग ऑलराइट इन डिफरेंट वर्जन। तो डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट्स होंगे और हमारे कस्टम ऑब्जेक्ट्स होंगे। जो डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट्स होंगे वो फायरवॉल के साथ इनबिल्ट आते हैं, एंड सम आर कस्टम ऑब्जेक्ट्स जो आपने क्रिएट किए। ऑलराइट, वेदर फ्रॉम द इनलाइन यानी अगर आप फायरवॉल रूल क्रिएट कर रहे हो, वहाँ पे एक ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ी जो है नहीं, ओके तो आपने वहाँ पे क्रिएट कर दिया, दैट इज इनलाइन। और आपने पहले से ही प्री प्लान करके ही आपका पूरा नेटवर्क है, तो आपने पहले से ऑब्जेक्ट सारे क्रिएट करके रखे हुए हैं, सिर्फ आपको यूज करना है। तो आपका ये कब काम आता है, ये आपका कॉन्फ़िगरेशन स्पीड अप करने में काम आएगा। यानी you don't have to create the object again and again। एक ही ऑब्जेक्ट को आप यूज कर सकते हो बहुत सारी जगह पे। और लेट्स से जब हम आगे जाके आईपीसेक और एमपीएलएस फेल ओवर करेंगे, ओके हेड ऑफिस और ब्रांच ऑफिस के बीच भरत में। सर, स्क्रीन फ्रिज है क्या? मीन्स यस 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 ओके इट इज, यस इट इज फिक्स्ड। ओके। एक्चुअली आई एम जस्ट डिस्कसिंग व्हाट आर द ऑब्जेक्ट्स जो हमने कल रिवीजन किया था। यस यू हैव मिस द क्लास, सो कल का जो एक क्लास है वो आप देख लेना, ठीक है। यस यस, कल श्योर सर, मैंने कल मैंने ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए थे लैब पे, और उसको आज हम यूज करेंगे। श्योर ऑलराइट, सर, श्योर। ओके सो yes, about the default objects we have created, coming back to the country objects, जो default थे वो कहाँ से होंगे, पैटर्न अपडेट में से होंगे, राइट। जो पैटर्न अपडेट था हमारा, okay we'll see that on everything on the lab। so today next is profile। जो प्रोफाइल्स होगी, जैसे ऑब्जेक्ट्स है वैसे प्रोफाइल है और पॉलिसीज है, राइट। सो डिफॉल्ट पॉलिसीज, डिफॉल्ट प्रोफाइल, डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट्स, वैसे कस्टम प्रोफाइल, कस्टम ऑब्जेक्ट्स एंड कस्टम पॉलिसीज, ये सब इससे ही हमें प्ले करना है, मीन्स इससे ही हम खेलेंगे। ऑलराइट, वी विल प्ले, वी विल बिल्ड, वी विल डिस्ट्रॉय, वी विल प्ले, वी विल क्रिएट, वी विल डिस्ट्रॉय। जितना ये प्रैक्टिस हम करेंगे इतना ही हमें फायरवॉल के बारे में पता चलेगा कि वो कैसे काम करेगा। ओके हेलो सो हेलो यस सर, रितेश बोल रहा हूँ। यस रितेश। सर एक्चुअली कल मैं अपना ये क्लास अटेंड प्रॉपर कर नहीं पाया था क्योंकि मेरा एक मीटिंग था। तो मैंने ज्वाइन तो कर लिया था लेकिन प्रॉपर मैं क्लास अटेंड कर नहीं पाया था। तो सर इसका वीडियो मुझे मिल सकता है तो मैं देख के कंटिन्यू कर सकूँ उसको? आई थिंक आपको मिल जाना चाहिए, बट अगर नहीं मिला है तो मैं सर से बात करता हूँ, अभिषेक सर आपको प्रोवाइड कर देंगे। ऑलराइट, ओके सर, ओके कल सर, का थैंक यू। कल का तो आपको वीडियो एक बार देख लीजिए, क्योंकि उसमें मैंने लैब प्रैक्टिस थोड़ा करवाया है, वही हम आज भी कंटिन्यू करेंगे। एक बार मैं आपको अभी दिखा देता हूँ थोड़ी देर में। ओके सर, राइट, थैंक एंड yes of course I will inform my team to share you all the videos first। okay so जैसे ऑब्जेक्ट्स थे वैसे हमारे प्रोफाइल्स है यहाँ पे। तो कौन कौन सी प्रोफाइल्स है, सो वी हैव स्केड्यूल, स्केड्यूल कर सकते हैं, यानी वी कैन स्केड्यूल द टाइम। ओके, कौन से टाइम पे, लेट्स से स्केड्यूल कैसे होगा, स्केड्यूल यानी कौन से टाइम पे कब आप एक चीज एक्सेस कर सकते हो। लेट्स से आपको यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम ऑफिस वालों को अलाउड करना है, ठीक है, ब्लॉक्ड है आपके ऑफिस में, ये सारी सोशल नेटवर्किंग साइट्स ब्लॉक्ड है। ऑलराइट, एंड यू वांट टू अलाउ इट फॉर पर्टिकुलर टाइम, लेट्स से लंच आवर में ही अलाउड करना है। और वो भी हम कर सकते हैं, लेट्स से पर्टिकुलर यूजर को ही देना है, लेट्स से इतना फुल हम कर सकते हैं। लेट्स से कोई पर्टिकुलर यूजर है, सो एट दैट टाइम यू विल क्रिएट स्केड्यूल पॉलिसीज। सो स्केड्यूल पॉलिसी क्या होगा, डिफाइन अ पीरियड ऑफ टाइम। और इसको हम वन टाइम यूज कर सकते हैं। रिकरिंग क्या होता है, यानी बार बार अगर हर रोज यूज करना है, कौन कौन से दिन यूज करना है। रिकरिंग वन ऑफ क्या है वो हम पॉलिसी में देखेंगे अभी। ऑलराइट, सो रिकरिंग और ऑफ, दैट मीन्स अगर ये आए यहाँ पे कोई भी यहाँ पे, दैट मीन्स यू कैन यूज दैट स्केड्यूल अगेन एंड अगेन। ऑलराइट, लेट्स से पूरा वीक में ब्रेक टाइम में 1 to 2 लंच आवर्स में सोशल मीडिया अलाउड होना चाहिए। ऑलराइट, सिमिलरली उसी जो स्केड्यूल का एक्सेस टाइम हम डिनाई कर सकते हैं या फिर अलाउ कर सकते हैं, तो उस पे एक्शन ले सकते हैं। वो स्केड्यूल पे क्या करना है कि अलाउ करना है या फिर डिनाई करना है। लेट्स से सोशल यूट्यूब ब्लॉक नहीं है, अलाउड है, सब कुछ अलाउड है, बट आपको डिनाई करना है, यानी इस ये टाइम से ये टाइम पे आपको ब्लॉक करना है। ऑलराइट, दैट वुड बी योर एक्सेस
एक्सेस टाइम प्रोफाइल। तो स्केड्यूल और एक्सेस दोनों मिलके काम करेगा। ओके, बाकी तो सारी पॉलिसी एक साथ काम करती है, but this way you can use these profiles individually as well. सर स्क्रीन पे कुछ नहीं आ रहा है सर। Ketan, just give me a minute. Yeah, Ketan? पे खाली गार्टनर का ही दिख रहा है कुछ, वो आपने फ्रीज करके रखा है क्या फिर? Yes, it is freeze. You can see हाँ हाँ, schedule देख सकते हो? नहीं दिख Can- रहा है ना। Okay, I am so sorry. Yes, yeah, let me share the screen. Okay. Okay. So प्रोफाइल के बारे में बताया मैंने। प्रोफाइल, सो प्रोफाइल में कौन कौन से पॉलिसीज होंगी जो मैंने आपको, जैसे डिफॉल्ट होती है, राइट, डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट्स थे फायरवॉल पे, सिमिलरली डिफॉल्ट प्रोफाइल्स भी होगी। तो कौन कौन सी प्रोफाइल्स होगी यहाँ पे? एक तो होगी स्केड्यूल, द फर्स्ट वन। आई होप एवरीवन कैन सी द स्क्रीन, राइट? स्केड्यूल, सो यस स्केड्यूल, सर। या सो स्केड्यूल वो क्या होगा, यानी एक आप टाइम डिफाइन करोगे कि अभी जैसे मैंने एग्जांपल बताया, राइट, यूट्यूब आपको लंच आवर में अलाउड करना है, ऑलराइट, और उसके बाद ब्लॉक करना है। सो you can use schedule policy and access time policy. So these are the two policies we will use. The third is surfing quota. Surfing quota क्या होगा? यानी एक यूजर के ऊपर आप सर्फिंग कोटा अप्लाई करोगे। एक कोटा, एक ब्राउजिंग टाइम, एक टाइम लिमिट सेट करोगे कि यही टाइम पे वो इंटरनेट सर्फ कर पाएगा। ओके, फुल इंटरनेट एक्सेस यही टाइम पे एक्सेस कर पाएगा, फॉर एग्जांपल। सो दिस पॉलिसी ऑल्सो आप रिकरिंग और वन ऑफ, यानी आप उसको बार बार यूज कर सकते हो। ऑलराइट, जस्ट गिव अ मिनट। ओके, I'm just keeping you on mute. Okay, you can raise your hand or you can just stop me in between. I will, अगर कोई डाउट है तो ओके, इसमें नहीं समझ में आ रहा है तो बता देना, नो वरीज। बट अगर नहीं समझ में आ रहा है तो शायद लैब पे और सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। देन वी हैव नेटवर्क कोटा। तो आप नेटवर्क बैंडविड्थ भी डाल सकते हो। सो बैंडविड्थ यानी 1 Mbps 2 Mbps, राइट। अपलोड डाउनलोड स्पीड कंबाइन करके भी हम डाल सकते हैं। सो वी कैन restrict the user with the help of traffic quota. Okay, तो traffic quota वर्ड है यानी हमारा स्पीड होगा, इंटरनेट स्पीड। ओके, दूसरा है हमारा डिक्रिप्शन। सो हम करेंगे, वी विल सी द डिफॉल्ट सेटिंग्स। सो हम ज्यादातर तो डिफॉल्ट सेटिंग्स यानी कुछ जो फायरवॉल पे आते हैं वो डिफॉल्ट सेटिंग्स मैं आपको बताता हूँ। विल सी व्हाट आर द, कौन कौन सी डिफॉल्ट सेटिंग्स है उसी को यूज करना है, या फिर हमें कोई अपनी कस्टम पॉलिसी क्रिएट करना है डिस्क्रिप्शन के लिए। ओके, सो वी विल यूज अबाउट SSL TLS डिस्क्रिप्शन। ये क्या करेगा, हमारा फायरवॉल उसको डिक्रिप्ट करेगा। ओके, सॉरी फॉर दैट। And then we have device access, a role for administrator. जो रोल्स होंगे, लेट्स से यू हैव L1 इंजीनियर, यू हैव L2 इंजीनियर्स, ओके, और आपको एक्सेस देना है। कौन सी राइट्स देनी, वी विल डू विद द हेल्प ऑफ एक्सेस डिवाइस। So profiles, what are profiles? So they are the collections of settings that can be defined and used when configuring protection features. So these profiles used for a schedule which defines a period either recurring or वन ऑफ। रिकरिंग यानी उसको हम बार बार ऑटोमेटिक ही यूज होगा, जो हम लैब पे देखेंगे। अगर वन टाइम यूज करना है तो वन टाइम यूज करेंगे। सो हम तो लैब पे दोनों टेस्ट करेंगे। ओके, वन टाइम भी चेक करके देखेंगे वेदर इट इज वर्किंग और नॉट, whether reoccurring is working or not for schedule, access time, surfing quota, network quota, okay, description and so on. जो जितनी भी प्रोफाइल्स है 6 सारी यूज करेंगे। access time that defines to allow or deny the action for the schedule। तो जो हमने schedule बनाया है, ठीक है, उसका access time होगा, वो डिफाइन करेगा क्या आपने एक्शन लिया उसके ऊपर, उसको अलाउ करना है या फिर डिनाई करना है। एंड वी हैव सर्फिंग कोटा। सर्फिंग कोटा भी रिकरिंग होगा, उसको हम बोल सकते हैं ब्राउजिंग, यानी ब्राउजिंग टाइम डिफाइन कर रहे हैं उसको, ठीक है। देन वी हैव नेटवर्क ट्रैफिक कोटा फॉर अपलोड एंड डाउनलोड बैंडविड्थ कोटा रिस्ट्रिक्शन। तो आप बैंडविड्थ दे सकते हो, कंप्लीटली अपलोड डाउनलोड और इंडिविजुअली अपलोड डाउनलोड स्पीड दे सकते हो। लेट्स से आपने 2 Mbps दिया अपलोड और डाउनलोड के लिए, यानी 1 Mbps अपलोड के लिए और 1 Mbps डाउनलोड के लिए, अलग अलग वो बैलेंस कर लेगा। ऑलराइट, और आप इंडिविजुअल भी दे सकते हो कि 2 Mbps अपलोड के लिए, 2 Mbps डाउनलोड के लिए, वो भी दे सकते हो।
So we'll see that in action. I'm so sorry. Okay. Description for controlling the description TLS. So TLS traffic, okay, जो आपका browser का traffic है, okay. So don't worry if you don't have deep knowledge about TLS, but everyone knows what is TLS. TLS क्या होता है अपना जो browser पे, let's say we are accessing Google, okay, on HTTPS. That is a secure connection that works on TLS. So you might be 1.2, you might be on 1.2 or 1.3 version, okay. So 1.1, 1.2, 1.3. These are the version of TLS. Okay. कैसे check करेंगे? You can click, you can press F12 on Chrome browser, open Google, and just press F12, press करना है, and you will know on which encryption protocol your communication is working. So you can know, all right, and we will discuss about that in detail how Sophos handle the TLS traffic. Okay. Next is the device access. Device का access हमें कैसे define करना है? So we will define the roles. Roles define करेंगे L1, L2, L3 engineers के लिए, so that they can log into the GUI of the firewall, web admin of the firewall. Now interface and routing. All right, interface and routing कैसे करेंगे हम? Sophos firewall पे. So we have, you can see the diagram first. हमारे पास Sophos firewall है, LAN 1 है, LAN 2 है, ओके. यहाँ पे एक नेटवर्क है, यहाँ पे भी एक नेटवर्क है, यहाँ पे भी एक नेटवर्क है, राइट. यहाँ पे सर्वर्स है, यहाँ पे यूजर्स है, यहाँ पे some other users है, other departments में, let's say, and it is connected to your internet. All right, so these are called zones. LAN zone, LAN 1, LAN 2, DMZ zone. DMZ zone भी एक टाइप का ही जोन ही, ओके. LAN zone ही है, लेट्स से, ओके. ज्यादा कंफ्यूज इसमें नहीं रहना है. It's a one type of network, okay, but it is a particularly defined zone, that is DMZ zone, demilitarized zone. So इसमें भी कम्युनिकेशन होता है, जैसे LAN पे कर रहे हैं वैसे ही होता है, बट इसमें हम स्पेशल फायरवॉल रूल्स डिफाइन करेंगे कि कौन सी सर्विसेज LAN 2 यूजर्स, LAN 1 यूजर, LAN DMZ यूजर्स का सर्वर में क्या एक्सेस कर सकते हैं. लेट्स से HTTPS और SSH जो होता है, कौन से यूजर एक्सेस कर सकते हैं, तो वो रूल से डिफाइन करना है, उसी को एक्सेस होगा. पूरा भी एक्सेस दे सकते हैं, जैसे ये दो कम्युनिकेट कर रहे हैं वैसे इन दोनों को भी कम्युनिकेट करा सकते हैं. इसमें So Bharat sir, this is the interzone interzone routing in this we need to do. जैसे LAN 1 LAN 2 में राउटिंग करते हैं, वैसे ही आप कर सकते हो इसमें सेम कम्युनिकेशन. मींस यहाँ पे हमको पॉलिसी अलाउ करना पड़ेगा जोन टू जोन, आई थिंक, एज पर द पालो अल्टो फायरवॉल, आई थिंक. yes correct. So zone, we are talking about zone only. तो Palo Alto भी zone based firewall है, okay, वो भी zone based होता है, ये भी Sophos में भी zones है. So यहाँ पे There are 3 requirement: routing, netting and policy, I think. Yes, we are coming to that on the next slide. Yeah, sure. So यहाँ पे zones है. अभी यहाँ पे डायग्राम में कितने zones दिख रहे हैं? सिर्फ हमें 3 zones दिख रहे हैं. That is LAN zone 1, okay, LAN zone 2. This is LAN zone, but it is divided into sub part 1 and 2. This is LAN zone. Then we have DMZ zone and WAN zone. Okay, 3 zone है. ये इंटरनेट के लिए जनरली अगर Cisco कॉन्फ़िगर किया तो अनट्रस्ट बोलते हैं. Palo Alto we also say untrust, we can say, or WAN zone. And here these are trusted zone. So trust, untrust, that's it. And this is also trusted zone, or we can give another name as DMZ zone, जहाँ पे हमें particular servers रखे हैं load balancing के लिए, for example. All right, so this is the zone. जो हम next हमारा topic है interface and routing. What are zones? Okay, how we can create our own zone. So Sophos firewall is also a zone-based firewall. It is important to understand what are zones is before we proceed to what are interface and before we go with the interface and routing. So when we talk about zones on Sophos firewall, we have logical grouping of the network. Okay, so networks, so let's say zone, those who are not getting, भूल जाओ ये जोन है, बट जो भी डिफरेंट ये जितने भी जोन्स होंगे, ओके, उसमें डिफरेंट नेटवर्क्स ही रन हो रहा होगा. और आप जब भी नेटवर्क कॉन्फ़िगर करते हो, नया इंफ्रास्ट्रक्चर कॉन्फ़िगर करते हो, आप लैब प्रैक्टिस करते हो, तो हमेशा अलग अलग
आईपी एड्रेसेस, और इवन आपका नेटवर्क भी यूनिक होना चाहिए। और अगर सोफोस में भी ऐसा है तो आपको यूनिक आईपी है, आप डुप्लीकेट आईपी यूज नहीं कर सकते। लेट्स से ओके, लेट्स से आपने आपका इंटरनेट का कनेक्शन आ रहा है यहाँ पे एंड यू कॉन्फ़िगर सेम आईपी, दूसरा एक नेटवर्क आ रहा है, आप उसने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, तो सेम नेटवर्क नहीं कॉन्फ़िगर कर सकते। यू कैन नॉट कॉन्फ़िगर द सेम नेटवर्क इन एनी ऑफ दी आई थिंक राउटर, कोई भी कहीं पे भी वो इशू करेगा। सो द जोन्स आर डिफरेंट नेटवर्क्स, जो भी जोन्स को आप कंसिडर कर सकते हैं अलग अलग नेटवर्क है that is the logically divided, so you can give zone LAN 1 LAN 2 है तो वो जोन तो LAN ही है, ऑलराइट। डीएमजी भी कर सकते हैं, जैसे डीएमजी 1 2, और उसको हम डीएमजी जोन पे डाल सकते हैं सिमिलरली सेम। Okay, so is a logical group of the network where traffic originate or destined to each interface is associated with single zone, which means that the traffic can be managed between zones rather by interface or network, simplifying the configuration। यानी आपको यू डोंट हैव टू, आपको ऐसा नहीं देखना है कि पोर्ट 1 से पोर्ट 2 जाना है, या फिर मुझे पोर्ट 3 से पोर्ट 4 जाना है, या फिर मुझे ये वाला नेटवर्क से ओके 192.168.1.0 से मुझे 196.1.2.0 जाना है। नो, व्हाट यू कैन डू, आप जोन टू जोन फायरवॉल जो रूल्स कॉन्फ़िगर करते हैं वो करेंगे हम, यानी वो जोन ही सिलेक्ट करना है, ऑटोमेटिकली उस जोन से रिलेटेड आपको ट्रैफिक ingress or out हो जाएगा। Alright, so we'll see that. So you have to select the zone instead of interfaces or जो interface होते हैं firewall पे, ठीक है, वो आपको interface select करने की जरूरत नहीं, you have to select the zones। Alright, so yes, the interface and the zone are not equivalent, those are not equivalent, but yes, multiple interface can be associated with that zone। तो आप एक मल्टीपल इंटरफेस होते हैं, राइट, अलग अलग नेटवर्क्स आपके पास है, अलग अलग इंटरफेस यानी अलग अलग नेटवर्क हुआ आपका, राइट, पर अलग अलग जो भी नेट इंटरफेसेस है आप उसमें जोन असाइन कर सकते हैं। वो क्या है, एन है या फिर डीएमजी है या फिर वैन जोन है, एमपीएलएस जोन है, वाईफाई जोन है, या फिर कोई प्रिंटर का जोन है, सो ऑन। फिर जोन के ऊपर भी आगे हम आते हैं, उस पर क्या करेंगे आगे कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है, वो सारी एप्लीकेशन एप्लीकेबल रहेगा सब इंटरफेस पे। सो फायरवॉल पे जोन्स, ओके, कहाँ पे यू हैव टू क्लिक ऑन कॉन्फ़िगर नेटवर्क और जोन्स होंगे यहाँ पे। ओके, सो दिस वुड बी द लाइक डिफॉल्ट डिफॉल्ट जोन है यहाँ पे, लैन वैन डीएमजी वीपीएन एंड वाईफाई। यू कैन एडिट दिस जोन। एडिट में क्या कर पाएंगे, जो डिवाइस का एक्सेस की राइट्स होगी वो आप एडिट कर पाएंगे, रेस्ट विल बी रिमेन एज इट इज, आप उसमें ये डिलीट नहीं कर पाओगे। ओके, दिस आर द डिफॉल्ट जोन ऑन द फायरवॉल, यू कैन नॉट डिलीट इट। ओके, तो I think rest of the file में zone create करना पड़ता है if you want to define some zone, but in Sophos by default zone create हुए आते हैं, और जब भी आप boot करते हो firewall तो automatically internet मिल जाता है, you don't have to create the firewall rule and the net rule which is required। okay, जो net rule होता है firewall rule चाहिए होता है, उसके बिना तो इंटरनेट नहीं चलेगा। ओके, उसको हमें सोर्स डेस्टिनेशन डिफाइन करना पड़ेगा, तब जाके वो इंटरनेट पे पहुंचेगा। बट जब आप फायरवॉल डिप्लॉय करते हो तो ऑटोमेटिक रूल्स क्रिएट हो जाते हैं, थोड़ा सा ऑटोमेशन है यहाँ पे, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट द complex configuration with the if I have also have experience with some of the firewall, तो आपको इतना कॉम्प्लेक्स जाने की जरूरत नहीं, ये सिंपली यहाँ पे ऑटोमेटेड भी है तो ऑटोमेटिक भी हो जाएगा। प्लस अगर नहीं होता है तो हम ये सपोज पैकेट फ्लो देखेंगे, ट्रैफिक कहाँ से आ रहा है और कहाँ जा रहा है और कहाँ से लाना है और कहाँ पे बेचना है। ओके, तो उस हिसाब से हम फायरवॉल रूल्स यहाँ पे उसको फाइन ट्यून करेंगे एंड देन वी विल मेक इट वर्क्स। सो अबाउट जोन्स, जो भी जोन के मेंबर होंगे, यानी लैन पे है तो जितने पोर्ट, जो पोर्ट्स पोर्ट 1 3 फॉर एग्जांपल यहाँ पे, और XG2 लैन ये कस्टम इंटरफेस है, उसका नाम दिया है, तो जो भी उसके मेंबर होंगे ओके फॉर लैन वो आपको यहाँ पे देखेंगे, यू कैन सी इट फ्रॉम हियर। यू कैन गो टू कॉन्फ़िगर नेटवर्क एंड जोन्स, और जैसे कि फायरवॉल्स पे जो मॉडल नंबर होता है, ठीक है, मॉडल नंबर यानी हार्डवेयर होता है या फिर सॉफ्टवेयर होता है, उस पे पोर्ट्स होते हैं। ओके, पोर्ट्स लेट्स से किसी में 4 पोर्ट्स होंगे, किसी में 8, किसी में 12 24, ओके, सो ऑन।
सो कौन से पोर्ट यूज में है और कौन सा पोर्ट कौन से जोन पे है वो आपको यहाँ पे मिलेगा। ऑलराइट, सो यू विल गेट दैट डिटेल्स। दिस इज वेरी हेल्पफुल टू सी कि वेदर आपने वो पोर्ट को उस जोन पे डाला है कि नहीं। जैसे कि कोई नया एसपी है, राइट, तो नया एसपी उसमें यहाँ पे अटैच हो गया, वो मेंबर बन चुका है, देन यू कैन वेरीफाइड फ्रॉम हियर। ओके, डिफॉल्ट में आ जाएगा, बट यस इसको हम डिलीट और चेंज नहीं कर सकते। ओके, बाय डिफॉल्ट ही है। फिर उसके बाद टाइप आएगा वैन, लेट्स से और आपने क्या क्या अलाउड करके रखा हुआ है वो यहाँ पे दिखेगा। लेट्स से पिंग अलाउड करके रखा हुआ है, HTTPS सर्विस ऑन करके रखी हुई है, SSH, SSL VPN एंड यूजर पोर्टल एनेबल कर रखा हुआ है। सो यू विल सी फ्रॉम हियर ऑल्सो, यू विल सी फ्रॉम द डिवाइस एक्सेस जो मैंने बताया था, राइट, उस पर भी बताएगा। दोनों जगह पे वेरीफाई करना है, दोनों जगह पे वेरीफाई कर सकते हो सो दैट यू नो हाउ इट वर्क्स। सिमिलरली DMZ जोन पे आप देख सकते हो कौन से जो टिक मार्क किया होगा वो आपको दिखेगा। ओके, सो यहाँ पे सब सारी सर्विसेज अलाउड है, लैन पे ट्रस्टेड है उसलिए। वैन पे जनरली सम आर नॉट नीडेड बट इट्स फाइन इन दिस, जो ये स्नैपशॉट में इट्स फाइन, डोंट हैव टू वरी। नाउ यहाँ पे VPN है। सो VPN आप एक जोन क्रिएट नहीं कर सकते, VPN जोन। ओके, सो सारे जोन्स क्रिएट कर सकते हो, लैन जोन, वैन जोन, DVN, वाईफाई जोन, प्रिंटर जोन। और यहाँ पे एक VPN डिफॉल्ट एक है, यहाँ पे आप ऐड करोगे तो कोई VPN जोन ऐड नहीं कर पाओगे। ओके, टाइप जो है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट एक है वो सबके लिए रहेगा। अगर आप IPsec VPN कॉन्फ़िगर कर रहे हो, ठीक है, जो हम करेंगे, तो बाय डिफॉल्ट इसके अंदर आ जाएगी, जैसे कि ये राउट बेस के लिए, ठीक है। सो दैट इज द रीजन आपको XFRM मिलेगा। ओके, कोई भी नंबर हो सकता है यहाँ पे। सो एक्स, और यहाँ पे कौन सी सर्विस अलाउड है, SNMP, और पिंग भी कर सकते हैं वो, विल सी दैट वी विल गिव द राइट्स। okay, and so on. So these are zone, and you will see the description, how you can manage, how you can add, how you can delete the custom zone। अगर आपने कुछ बनाया तो delete कर सकते हैं, and so on. Okay, so Sophos Firewall comes with the five default zone. So जो Sophos Firewall में 5 default zone तो होंगे, कौन कौन से? LAN, WAN, DMZ, VPN. So LAN is the most secure zone by default, and it is your internal network, यानी trusted वाला। ओके, ट्रस्टेड एंड ट्रस्टेड, जिसने राउटर कॉन्फ़िगर किया है, देन यू आपको रिकॉल हो गया होगा। ओके, वैन जोन इज आल्सो यूज्ड फॉर एक्सटर्नल इंटरफेस, जनरली आपका ISP और मे बी योर MPLS लिंक। ओके, दैट आपका MPLS लिंक हो सकता है, आपका ISPs हो सकते हैं, दैट वुड बी योर अंडर वैन जोन। ओके, यहाँ से हमारा SD-WAN आएगा, that is provided for internet access or accessing your remote branch offices and so on. Then you have DMZ zone. This zone is hosted publicly accessible server. तो हो सकता है अगर आपको कोई पर्टिकुलर एक अलग से सेगमेंटेशन किया हुआ है, ओके, तो DMZ एक सेगमेंटेशन का ही पार्ट है। सेगमेंट करना यानी आपका नेटवर्क डिवाइड कर रहे हो अलग अलग स्मॉल सब नेटवर्क में। तो एक हमारा जब DMZ जोन आता है तो जनरली पब्लिकली एक्सेसिबल सर्वर, यानी हम उसको बाहर भी उसको पब्लिश कर रहे हैं, यानी इंटरनेट पे एक्सेस होता है। लोकली तो एक्सेस होगा सर्वर, वेबसाइट लोकली एक्सेस होगा लैन में, बट हमको बाहर से एक्सेस करना है, DMZ से भी कर सकते हैं, लैन से भी कर सकते हैं। ओके, अगर कस्टम जोन है तो वहां से भी कर सकते हैं। कर तो सब कॉन्फ़िगरेशन तो पॉसिबल है, उसको प्रोटेक्ट करना भी पॉसिबल है, बट यस ऑफ कोर्स सेगमेंटेशन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट रेदर देन जब एक ही जगह पे हम नहीं डालेंगे, सब अलग अलग नेटवर्क पे अलग अलग जोन्स पे डालो। ऑलराइट, जैसे कि सर्वर का अलग से जोन, यूजर का यूजर 1, यूजर ग्रुप 1 के लिए अलग, यूजर 2 ग्रुप के लिए अलग, वाईफाई यूजर्स के लिए अलग, ऑलराइट, एंड सो ऑन, प्रिंटर्स के लिए अलग। ऐसे नेटवर्क को सेग्रीगेट कर दो तो इजी रहेगा मैनेज करना, और अगर कोई अटैक भी होता है एक जोन में तो दूसरे जोन को वो इफेक्ट नहीं करेगा। सो दैट इज द रीजन वी हैव जोन्स हियर। ओके, और भी आगे फीचर्स हैं, सो कैसे प्रोटेक्ट करेगा वी विल सी दैट, क्योंकि ऐसा नहीं कि जोन उसको प्रोटेक्ट करेगा, राइट। अगर और भी एडिशनल सिक्योरिटीज नहीं होगी तो you might have the chances of attack. Next is VPN zone. This is the only zone that do not have a physical port. कोई physical port नहीं है उसका, but उसका virtual port है. Okay, so interface assigned to it. When a VPN is established, either to site or remote access, the connection is dynamically added to the zone.
and remove when disconnected. तो जब आप साइट टू साइट या फिर साइट टू साइट कनेक्शन करते हो तो ऑटोमेटिकली उस जो वीपीएन उसके अंदर वो मेंबर बन जाएगा. अगर वो मेंबर को हम निकाल देंगे तो ऑटोमेटिक वहाँ वो मेंबर से हट जाएगा, बट जोन वहाँ पे रहेगा. ओके, यू कैन नॉट डिलीट दैट वीपीएन जोन that is there. Okay, so it is not a physical zone, it is a logical zone. Now next is the Wi-Fi zone, और एक zone है Wi-Fi zone. This zone is of providing security for wireless network except for the VPN zone. So yes, of course, you cannot make any security on the VPN zone. It is already secure. The default zone can be customized. Zones are managed under and created under configure network and zones. So आपको सारी पैरामीटर्स कहाँ पे नेविगेशन से यू शुड नो वेयर टू ऐड व्हाट. लेट्स से कहाँ पे ऑब्जेक्ट ऐड करना है, कहाँ पे जोन ऐड करना है, कहाँ पे नेटवर्क ऐड करना है, कहाँ पे राउटिंग अपडेट करना है, और कहाँ पे फायरवॉल रूल्स अपडेट करना है, वेफ कहाँ देखना है, पैकेट फ्लो कहाँ पे देखना है हमें, और लोग व्यूअर कैसे देखेंगे. राइट, यस ऑफ कोर्स अभी आएगा, बट ये पॉइंट हमें पता होना चाहिए. नाउ जब हम जोन क्रिएट करते हैं, नया वाला जोन क्रिएट करते हैं, देन वंस यू क्लिक ऑन ऐड, जो ऐड वाला बटन है ना यहाँ पे, इफ यू क्लिक ऑन दिस ऐड, तो देखो कौन कौन से ऑप्शंस आते हैं उसके बाद. ओके, डिफॉल्ट यूज करो तो इट्स फाइन, जोन क्रिएट करने की जरूरत नहीं है. बट लेट से इंट्रानेट करके भी जोन होता है, तो ये क्रिएट इंट्रानेट इंटरनल पर्पस के लिए, इंटरनल एक्सेस के लिए, तो यू कैन क्रिएट योर जोन. लेट से इंट्रानेट, एक एग्जांपल इंट्रानेट. डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, टाइप सिलेक्ट करो कि वो कौन से टाइप का है, डीएमजी जोन है या लैन जोन है. ये भी जस्ट अंडरस्टैंड दी जोन. उसको डीएमजी रखो तो डीएमजी जोन पे रहेगा, यानी अगर रूल होगा तो आपका बनेगा डीएमजी टू वैन. इंटरनेट की तरफ जाना है तो डीएमजी टू वैन, वैन टू डीएमजी. लैन करो तो लैन. ऑलराइट, देन मेंबर तो अभी यहाँ पे नन दिखेगा. वंस यू अप्लाई इंटरनेट ऑन द इंटरफेस, जिस इंटरफेस पे आपका इंटरनेट होगा, ठीक है, वो ऑटोमेटिक फिर यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा ऑटोमेटिक. फिर कौन कौन सी सर्विसेज देनी है यहाँ पे, एडमिन सर्विसेज है, यानी फायरवॉल का जो एडमिन HTTPS पे चलता है उसको देना एक्सेस. SSH देना है तो आप टिक मार्क कर सकते हैं, यू कैन लीव इट इफ यू डोंट वांट. अगर आपको ऑथेंटिकेशन करवाना है, ठीक है, कैप्टिव पोर्टल से या फिर विंडोज के वहाँ के अगर पीसी है, अगर वहाँ पे ऑथेंटिकेशन करवाना है, सेंड योर टिक मार्क. अदरवाइज ऐसा ये यू डोंट टिक मार्क दिस, इट्स फाइन. बट नेटवर्क सर्विसेज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर ए नेटवर्क इंजीनियर, यू कैन टिक मार्क ऑन पिंग. ओके, क्योंकि अगर पिंग टिक नहीं होगा तो टेस्ट करोगे तो ये फायरवॉल ड्रॉप कर देगा इंट्रानेट के लिए. सो दिस मस्ट आई थिंक, यस. नेक्स्ट इज अदर सर्विसेज. जो अदर सर्विसेज आपको अगर अलाउड करनी है, अदर सर्विस है यूजर पोर्टल, जो सोफोस का यूजर पोर्टल क्या है यहाँ पे, जो रिमोट जो रिमोट यूजर्स होते हैं, राइट, उसको कनेक्ट करना है या वीपीएन से कनेक्ट करना है. यू कैन, यस गौरव, गो अहेड. सर एक चीज पूछना था मुझे, जैसे पिंग 1 मिनट. और पिंग 6, दिस इज द IPv4 IPv6 है क्या? Yes, it is for both Okay, IPv4, and in IPv6. yes, intranet zone is the like same zone we need to packet flow from the one destination to other destination. This Intra zone, that means this would be for source and destination both. yes, for the same zone. Yes, for the same zone. Okay, and we need to enable also the like ping and SSH, all the things on the any port of the Sophos firewall. Management is it's already enable all the ports like HTTPS, SSH, all the ports. Hmm. Yeah, But but that manually is, I need to just enable on the different port for you have to the. you have to enable those services which are actually required. If you, let's say, if you enable HTTPS, तो कोई भी फायरवॉल का जियो एक्सेस लेके फिर उसमें अटैक करके पासवर्ड क्रैक कर सकता है, राइट. Okay, okay, तो क्या कर हाँ. तो उसको डिसेबल रखो. ओके, एज ए नेटवर्क इंजीनियर आई कैन से, लेट्स से, पिंग. ओके, नेटवर्क सर्विस, कैन यू सी नेटवर्क सर्विसेज हियर. तो मैंने पिंग एनेबल किया, दैट मीन्स मुझे अगर कोई कनेक्टिविटी टेस्ट करना है तो मैं इसको एनेबल करूंगा, अदरवाइज आई डोंट रिक्वायर पिंग आल्सो. इफ द सर थोड़ा सा वेब प्रॉक्सी का एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए, व्हाट इज वेब प्रॉक्सी? आई डोंट नो एक्चुअली.
या इट विल कम जो कोर्स के साथ हम करते हैं। अगर लेट से कोई, अगर आपका कोई पर्टिकुलर टॉपिक भी होगा गौरव, अगर वो कोर्स में इंक्लूड नहीं हो रहा है, ओके, आपने जो भी डाउट पूछा, तो फिर आगे जाके हम उसको कोर्स से बाहर से हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक ऑलराइट, ठीक सो सर, ओके एक फ्लो में जाते हैं पहले, उसके बाद या हम, या श्योर सर, क्योंकि आप जो पूछ रहे हो वो थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है। ओके ओके अंडरस्टूड। ओके, वेब प्रॉक्सी भी आएगा, यस ऑफ कोर्स वी विल यूज वेब प्रॉक्सी। अच्छा, इसके बारे में बता रहा हूँ, ये अलग से मैं आप इसमें आता हूँ। ओके, अदर सर्विसेज आई विल कम टू ईच एंड एवरी पॉइंट वी विल डिस्कस हियर, बट एज ऑफ नाउ जोन, जो हम, आपने पालो अल्टो पे काम किया, राइट? सो पालो अल्टो यस में भी श्योर, जोन, पालो अल्टो पे भी जोन क्रिएट किया, राइट? उसमें भी अपने यस सर्विस यस एनेबल की है, करेक्ट? yes, there Web are two proxies, default zone yes, of in course, that. One exactly. is the Allow uh, those service. yes, I'm a there are proxy. yes, there are two zone in that Palo Alto: intranet, 1 minute. internet. Gaurav. Yes, hello, hello. Yes, Gaurav, tell. हाँ, मैं ये कह रहा हूँ डिफॉल्ट जोन क्रिएट रहता है ऑलरेडी पालो अल्टो में, इंट्रा जोन और इंटरनेट जोन। Palo Alto में created, I think created है, right? उसमें यस यस, डिफॉल्ट में सर, वी कैन नॉट चेंज, वी कैन नॉट मॉडिफाई। एक हाँ, अलाउ रहता है, एक ब्लॉक रहता है। या सही है। या देखो, यस यस हाँ, करेक्ट। फायरवॉल्स में जैसे मैं अभी सोफोस में आपको बताऊं कि थोड़े से ऑब्जेक्ट्स जो होंगे, जोन्स होंगे, पॉलिसीज होंगी, प्रोफाइल्स होंगी, तो सारी फायरवॉल्स में डिफॉल्ट भी होती है और उसके बाद हम कस्टम क्रिएट करते हैं। तो डिफॉल्ट तो यस यस होती है, करेक्ट। जोन्स भी दो तीन कौन होंगे उसमें डिफॉल्ट। तो हम वही देख रहे हैं कि सोफोस में डिफॉल्ट कौन कौन से है, तो यहाँ पे भी 5 है, राइट? 5-6 जोन्स हमारे पास। ओके ये सब अंडरस्टूड। कोर्स दूसरी फावल्स में भी होंगे, डिफॉल्ट पॉलिसीज, डिफॉल्ट कस्टम रूल्स भी होंगे। ओके, रूल्स भी होते हैं डिफॉल्ट। सो वही देख रहे हैं हम, पहले हम डिफॉल्ट ही सब देख रहे हैं, सो वी कैन अंडरस्टैंड, वी कैन डायरेक्टली यूज, हमें सिर्फ डायरेक्टली यूज ही करना है, हमें कोई यहाँ पे क्रिएट नहीं करना पड़ेगा कोई पर्टिकुलर जोन। बट अगर हमें इन केस क्रिएट करना है, ये ऑफ कोर्स एज पर द रिक्वायरमेंट, तो हम कैसे करेंगे, कौन कौन सी सर्विसेज एनेबल करेंगे इस जोन पे, ऑलराइट? या फिर हम आगे जाके भी एनेबल कर सकते हैं, डिसेबल कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि उसी समय उसको करना है। ओके सर अंडरस्टूड। यस यस, कहता सर जो सब इंटरफेस बनते हैं ये भी बना सकते हैं उसके अंदर। जैसे अभी मेरे पास छोटा सा सोफोस फायरवॉल है, आई हैव ओनली 4 पोर्ट and I have number of VLANs in my network. हम्म, Okay, I want to make inter VLAN routing on a firewall itself. कर सकते हैं ये ऑफ कोर्स। लेट से आपने एक जो लैंड जोन ही है, ठीक है, वो तो लैंड जोन ही रहेगा। बराबर अगर है। अगर आपने 4 वी लैन बनाई है, ठीक है, एक होगा आपका लैन, एक होगा आपका इंट्रा लैन, एक होगा आपका डीएमजी जोन, एक होगा आपका लेट से प्रिंटर जोन, ओके, वाईफाई जोन भी है। तो ये सारे जोन्स आप वहां पे लगा सकते हो, यस। और और मैं सबके इंटरफेस पे लिए, आईपी भी दे सकता हूँ मैं। यस ऑफ कोर्स, यस, दे सकते हैं ओके, हम दैट्स उसको वो प्रैक्टिकल, आई नो आपने ये डाउट मुझे भी पहले भी पूछा, हम पूछा था। प्रैक्टिकल्स करेंगे। प्रैक्टिकल पे भी आप जो बोलेंगे वैसे ही कॉन्फ़िगर करते जाएंगे, जैसा ठीक है सिनेरियो। सर। ओके सर, Alright, थैंक we यू will सर। see that, don't worry. But yes, of course, यही जोन आपको वहां पे अप्लाई करना है, you can apply ओके these zones. So let's go to the next one. So these are the authentication service. So you can enable it if you, अगर आपको authenticate कराना है यूजर को for user and password के बाद ही उसको access मिलेगा, alright? We will see in action everything. जो भी हम पढ़ रहे हैं हम उसका practical तो एक भी नहीं, ऐसा नहीं कि सब practicals में ही देखेंगे mainly. So let's look how you can create your own zones. When you created custom zones, you can choose between two type of zone, land zone and DMZ zone, which is used to indicate the level of trust of the zone. All right, तो type of जितना हम enable disable करेंगे, that means the level of trust उस zone के ऊपर है हमारा, right? Like अगर हमने HTTPS enable कर दिया, ठीक है, तो कोई भी firewall access कर सकता है उस gateway IP से, right? अगर उसमें DHCP चल रहा है and user knows that this is the gateway IP, तो HTTPS लगा के access करेगा, firewall access आ जाएगा, right? So we will not tick mark for the security reasons. We will not enable any admin settings in particular zone, ठीक है, और admin zone अलग से बनाएंगे, let's say admin zone के लिए allowed है, okay, and some other zone it is not allowed. So this way you can define zone. To this is only to understand zone. Yes, of course, इनको पता है ये update होगा again, and those who don't know, now you know about what is zone and how they are used in day-to-day life. Okay, allowed or
ब्लॉक करने के लिए। बट इसके लिए हम डिफरेंट ACL भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। लेट्स से एक पर्टिकुलर इंट्राजोन में एक पीसी है जो एडमिन को यूज करना है, ओके, और उसको फायरवॉल का एक्सेस वहां से देना है इसी इंट्राजोन की IP से जो नेटवर्क पे है। तो हम क्या करेंगे, ACL क्रिएट करेंगे, ऑलराइट। नो, टिक मार्क नहीं करेंगे, नहीं तो सबके लिए ग्लोबल, ये ग्लोबल सेटिंग्स होगा, तो ग्लोबल ये अलाउड हो जाएगा। तो हम ACL क्रिएट करेंगे फायरवॉल पे, यानी पर्टिकुलर एडमिन का यूजर के सिस्टम के IP से ही उसको फायरवॉल का एक्सेस मिलेगा, बाकी कहीं से भी उसको एक्सेस नहीं मिलेगा। नॉट फ्रॉम द लैन जोन, नॉट फ्रॉम द वैन जोन, नो, एज पर द डेफिनेशन, एज पर द रूल, जो रूल हमने डिफाइन किया होगा उसी पीसी को ही फायरवॉल का GUI एक्सेस मिलेगा, CLI एक्सेस मिलेगा। या फिर सिर्फ पिंग देना है तो पिंग देंगे उस L1 L2 इंजीनियर को कि तुम सिर्फ पिंग चेक कर सकते हो, तुम सिर्फ आप GUI एक्सेस करके ये रीड राइट परमिशन एंड सो ऑन, so that can become under zones. So you can create your additional VPN or, okay, so as I said, no additional VPN or WAN zone you can create. तो WAN और VPN, okay, so Sophos की जब एग्जाम दोगे तो ये क्वेश्चन आएगा कौन से जोन क्रिएट नहीं कर सकते। So VPN and also WAN zone you cannot create it, so that is not possible. ट्राई करके देखना, अगर क्रिएट कर सकते हो then maybe they have the update on the सॉफ्टवेयर, ओके। सॉफ्टवेयर में हो सकता है कि VPN तो नहीं होगा, बट लेट्स से WAN ट्राई करो, मेरे को भी चेक करना पड़ेगा। आई डोंट बिलीव दैट यू कैन क्रिएट दिस टू जोन्स, बट LAN DMZ जोन अलग अलग क्रिएट कर सकते हो, वाईफाई जोन एंड सो ऑन। So you can customize those zone to define which services or Sophos Firewall provides and which is accessible. This is broken down into 4 categories. तो जो services है, admin services for accessing, managing the Sophos Firewall, authentication service है for user authentication, and network services for ping and DNS request, and other services which can control like web proxy, wireless access point, and user portal and forth. ओके, तो वेब प्रोक्सी, वायरलेस एक्सेस पॉइंट एंड यूजर पोर्टल, ओके, अपकमिंग मॉड्यूल्स में आएगा, ओके, सो डोंट वरी। सो लेट्स गो विद द फ्लो फर्स्ट। I will clear all your doubts even though the course is finished. If I left something or if I miss out something, we will come back to that point. Just note it down and I will come back to it. All right, मे बी हो सकता है कि कभी कभी आपको और भी क्लियर वे से भी बोलना पड़ेगा, शायद मेरे वे से if I understood, misunderstood something, or may I required, if I required more information, all right, to understand your scenario. So हो सकता है we will see and fix and we will work together to achieve the best network as much as I can. ओके, सो नेक्स्ट इज कॉन्फ़िगरिंग इंटरफेस। इंटरफेस कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे सोफोस फायर पे, तो कहाँ पे जाना है हमें, you have to go to configure network and interface। कॉन्फ़िगर पे क्लिक करना है, नेटवर्क पे एंड इंटरफेस, वहाँ पे सारे इंटरफेस पहले आपको दिख जाएंगे फायरवॉल पे कितने हैं हमारे पास, ओके। तो लैब पे तो बाय डिफॉल्ट 4 होंगे, ओके, उसको हम स्केल कर सकते हैं, यानी उसको बढ़ा सकते हैं लाइक 8 और 18 मे बी, ओके। यू कैन यूज एज मेनी एज यू वांट, यू कैन यूज फॉर, अगर आपको SD-WAN बहुत प्रैक्टिस करना है तो ज़्यादा पोर्ट्स चाहिए होंगे, राइट। सो you can edit on the lab and you can create your own topology, test it, okay। बट यहाँ पे जब मैं ऑलरेडी 3 ISP और 2 MPLS से करूँगा तो आप और ऐड अपने सही कर सकते हो एंड यू कैन सी द ट्रैफिक फ्लो। सो इंटरफेस कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे, इंटरफेस कॉन्फ़िगर करना यानी एक डिफरेंट नेटवर्क कॉन्फ़िगर करना, ऑलराइट। सो जो डिफरेंट नेटवर्क्स कॉन्फ़िगर करना है हमें, ऑलराइट। सो नेम देना है, लेट्स से यू कैन गिव द नेम, ओके। इंटरफेस पे आके ऐड नहीं करना है, यहाँ पे ऑलरेडी इंटरफेस होगा, वहाँ पे क्लिक करो एंड यू विल गेट दिस इंटरफेस। अभी लैब पे आता है, सो यू कैन सी द नेम देना है तो नेम दे दो, नहीं देना है तो इट्स ओके। बाय डिफॉल्ट पोर्ट 7 लिखा होगा लेट्स से यहाँ पे, ओके। देन नेटवर्क जोन, तो हार्डवेयर होगा, हार्डवेयर यानी जो पोर्ट होगा, और नाम भी बाय डिफॉल्ट पोर्ट वही होगा, पोर्ट 7। और इफ यू वांट टू एडिट, आप अपना खुद का भी इंटरफेस का नाम दे सकते हैं यहाँ पे, फ्रेंडली नेम जो आप याद रख सकते हो, राइट। देन वी हैव हार्डवेयर, उसको तो हम कुछ कर नहीं सकते, बट यस ये जोन होगा वो उसको हम चेंज कर सकते हैं। तो इंटरनेट है, लैन है, DMZ है, जो भी आपको असाइन करना है जोन, वो जोन असाइन कर दो। ये काम आएगा जब आप रूल कॉन्फ़िगर करोगे, फायरवॉल रूल्स कॉन्फ़िगर करोगे ना, जहाँ पे जैसे इंटरनेट देना है, तो कैसे इंटरनेट होगा, इंट्रा से वैन, या फिर आपको
लैंड है या फिर डीएमजी पे एक सर्वर है तो उसको कम्युनिकेट कराना है और आपको सिर्फ पिंग सर्विस देना है, तो क्या रूल कौन सा होगा? इंट्रा टू डीएमजी और इंट्रा टू लैन, और सर्विस में क्या अलाउड करेंगे? जो सर्विस आपको अलाउड करनी है, जैसे कि पिंग फॉर एग्जांपल। ओके, नाउ आईपी असाइनमेंट स्टैटिक देना है। पीओई तो नहीं दे सकते क्योंकि पीओई इंटरनेट जनरली इंटरनेट के लिए होता है, सो इट्स ओके, यू डोंट गेट कंफ्यूज हियर। डीएचसीपी पे देना है डीएचसीपी, बट स्टैटिक देना है हमेशा। ओके, इंटरफेस पे अगर आपको डीएचसीपी से आईपी मिल रहा है, ऑलराइट, तो स्टैटिक दे दो। पीओई लाइन है तो यहाँ पे पीओई लाइन तो होगा नहीं हमारे पास लैब पे, पीपीओई नहीं होगा हमारे पास। पीपीओई जनरली आईएसपी प्रोवाइड करेगा, or if you want to connect internet through PPOE connection. All right, so firewall support PPOE connection. We will discuss about this in the WAN zone. So ये तो LAN ही है, जैसे DMZ है LAN है, वैसे इंट्रानेट है, सेम, सब सेम ही है, तीनों आप सेम, बट नेटवर्क अलग होंगे। वहाँ पे जो नेटवर्क्स होंगे हमारे वो डिफरेंट होंगे, सेम नहीं होंगे। दैट इज द रीजन मैं आपको बोल रहा हूँ जोन्स, एंड जोन आपका ये होगा। सो यू कैन असाइन दी नेटवर्क। सो ये नेटवर्क हो गया, उसका पहला आईपी दे दिए यहाँ पे, फॉर एग्जांपल 55.1/25। यू कैन ऑल्सो यूज IPv6 अगर IPv6 आपको आता है और आपको कॉन्फ़िगर करना है विल्स। ओके, तो कोर्स पे IPv4 पे थ्रू आउट होगा, लास्ट में हम IPv6 को कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट है देन वी विल एनेबल इट, विल कॉन्फ़िगर इट, विल टेस्ट इट। ऑलराइट, सो दिस इज द गेटवे। तो ये होगा गेटवे आईपी। जितने भी इंटरफेस पे 7, ये जो सेवन इंटरफेस, उसके बाद एक लेट से एक स्विच रखा है आपने, स्विच कनेक्ट करा है, स्विच के पीछे बहुत सारे आपके पीसी है, तो गेटवे क्या होगा? 55.1, राइट। और इसके ऊपर आप डीएचसीपी रन करना है तो डीएचसीपी रन कर सकते हो, स्विच पे करना है तो स्विच कर सकते हो, रिले कर सकते हो स्विच से डीएचसीपी की रिक्वेस्ट अगर कहीं पे जाने देना है। सो आगे डीएनएस और डीएचसीपी भी है, लेट्स सी। Before that, what we have discussed till now. So now you know how to create zones. We look at the configuration of interface. By default, interface are named after hardware device ID. Okay, device ID के होगा, ये जनरली ट्रबल शूट में काम आएगा। As of now it's fine, मैंने ऑलरेडी बता दिया, राइट, हार्डवेयर ID. However, you can कुछ इशू नहीं आएगा, यू डोंट हैव टू इसमें कुछ डीप में जाने की इसमें जरूरत नहीं, इट्स फाइन। ये जनरली अगर कोई पोर्ट फेल होगा तो भी हम आगे जाके वैसे भी लॉग्स कलेक्ट करेंगे, कैसे हम देखेंगे कि हार्डवेयर पोर्ट्स पे कोई इशू है, हार्डवेयर फेल हुआ है कि नहीं, विल सी। अगर हार्डवेयर में पोर्ट अगर काम नहीं कर रहा है देन वी विल गेट द रिप्लेसमेंट, राइट। अगर वो पोर्ट नहीं चल रहा है तो फिर हम केस रेज करेंगे फॉर द RMA, नया रिक्वेस्ट होगा, एंड अगर लाइसेंस है तो नया डिवाइस मिल जाएगा। सॉफ्टवेयर में तो इशू नहीं आएगा, इट्स फाइन, विल सी दैट। सो बाय डिफॉल्ट देयर नेम, बाय डिफॉल्ट नेम कौन सा होगा? हार्डवेयर आईडी होगा। So however, you can give the friendly name if you want to give for easier identifying it. Easier to begin the configuration with network settings, you must assign the interface to a zone. तो जो भी इंटरफेस आप कॉन्फ़िगर करो, नेटवर्क कॉन्फ़िगर करो, उसको जोन दे दो, कोई भी जोन हो दे दो। आई थिंक वैन दोगे तो फिर उसका इंटरफेस चेंज हो जाएगा। ओके, लैन वैन में अलग रहेगा। सी व्हाट डिफरेंस यू सी विद द सोफोस फायरवॉल। So it will determine what IP configuration can be set as only interface in the WAN zone are configured with the gateway. Okay, तो अगर आपने WAN सिलेक्ट किया, ठीक है, WAN असाइन कर रहे हो, यहाँ पे कैसे इंट्रा सिलेक्ट किया तो यहाँ पे LAN भी सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आपने WAN सिलेक्ट किया तो आपको यहाँ पे गेटवे डिफाइन करना पड़ेगा। अगर आपने स्टैटिक किया तो ये ग्रे आउट हो जाएगा, यू डोंट हैव टू मेंशन द गेटवे आईपी। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी एक LAN जोन है। ओके, वैन जोन होगा तो उसको तो गेटवे तो देना पड़ेगा, कौन उसका अपस्ट्रीम डिवाइस है, तो ये एनेबल हो जाएगा। एंड यू हैव टू गिव द नेम ऑफ दैट गेटवे एंड यू हैव टू गिव द आईपी एड्रेस ऑफ द गेटवे। ओके, सो माइट बी ये 2 है तो ये हो सकता है ऊपर का जो राउटर है 1 इन केस ऑफ वैन। ओके, जो हमारे केस में है ऑलरेडी, हमने तो कॉन्फ़िगर किया हुआ है, अभी देखते हैं। सो यू विल कॉन्फ़िगर इंटरफेस इन IPv4 पे भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। जनरली ऑलमोस्ट ऑल द नेटवर्क्स आर इन IPv4 और IPv6 भी सपोर्ट करेगा, और दोनों एक साथ भी कॉन्फ़िगर कर सकते हो, इधर स्टैटिकली और यू कैन डिफाइन DHCP, बट बेटर है कि हमेशा स्टैटिक पे ही कॉन्फ़िगर करो। आप जब भी वैन लैब पे भी आपको जो IP एड्रेस है
वो पहले कहाँ पे मिलता है, DHCP से मिलता है। तो जैसे DHCP से IP असाइन हो जाए उसके बाद उसको स्टैटिक कर दो। ओके, यानी उसके बाद जो पहले क्या होगा कि इंटरफेस पे यहाँ पे आपका DHCP होगा, उसको IP मिल गया, देन क्लिक ऑन स्टैटिक। ओके, तो स्टैटिक हो जाएगा, जस्ट सेव इट, दैट्स इट। तो ऑटोमेटिक वो IP सेट हो जाएगा, तो आपको लैब पे इशू नहीं रहेगा। ऑलराइट, स्टैटिक है तो उसको ये सपोज लैब पे हम देखेंगे कौन कौन से उसको ट्रिक्स हैं फिक्स करने के लिए। ऑलराइट, जो रियल लाइफ से इशू नहीं होगा, कोई रिलेवेंट नहीं है उससे। ये ऑफ कोर्स लास्ट है, IPv4 configuration also support to configure via PPOE connection. So PPOE connection ISP provide करता है for internet connection. All right, so we don't have to worry about that router, or you can just go through the technology how PPOE works. That is fine. ज्यादातर तो सोफोस में इश्यू नहीं आता जब तक यूजर नेम एंड पासवर्ड गलत ना हो। ठीक है, तो अगर यूजर नेम इंसर्ट पासवर्ड गलत है, अगर PPOE कनेक्शन यानी एक इंटरनेट, हमारे पास दो इंटरनेट कनेक्शन था, एक एयरटेल से लिया और एक हमने लिया रिलायंस से। फॉर एग्जांपल रिलायंस ने दिया हमने PPOE कनेक्शन, उन्होंने एक अलग से पावर ओवर ईथरनेट दिया, राइट। तो उसमें क्या होता है, यूजर नेम पासवर्ड डालना पड़ेगा हमें। सो PPOE कनेक्शन मेंशन भी होता है फ्रॉम द ISP, ये आप उसको डायरेक्ट सोफोस पे कनेक्ट कर सकते हो, और PPOE सिलेक्ट करना है इंटरफेस पे जब आप फ्रेंड जोन सिलेक्ट करते हो यहाँ पे। तो यहाँ पे सिर्फ यूजर नेम पास, इसमें कोई इशू नहीं आता, जनरली पासवर्ड ही गलत होता है ज्यादातर, तो ये काम करेगा ही आपका। ओके, और स्टैटिक है तो अगर स्टैटिक IP ISP से प्रोवाइड किया तो इजी, आपको सिर्फ IP देना है जो ISP ने प्रोवाइड किया है, ISP आपको देता है। You have to just put the IP, the gateway IP and the name and the subnet. कौन सा सबनेट है, सबनेट IP and this gateway। अभी कितने टाइप के इंटरफेस है हमारे पास सोफोस में, कौन से इंटरफेस होंगे या फिर क्रिएट होंगे। ओके, लेट्स से अभी वी विल गो विद दिस ऑल द इंटरफेस, सारे इंटरफेस यू कैन सी। ओके, कलर कोड से भी हम उसको वी कैन रिकॉग्नाइज, हम उसको पहचान सकते हैं एक एक। ये सारे लॉजिकल होंगे इंटरफेस, राइट, नॉट फिजिकल। यानी फिजिकल और लॉजिकल इंटरफेस देखेंगे, कौन कौन से फिजिकल इंटरफेसेस हैं और कौन कौन से लॉजिकल इंटरफेस है। इंटरफेस यानी पोर्ट, जो फायरवॉल में पोर्ट होता है। ओके, सिंपल, बट एक फिजिकल पोर्ट होगा, बट लॉजिकल नहीं देख पाएंगे हम। लॉजिकल देखना है तो क्या करेंगे, GUI पे लॉगिन करके देख लेने का, ये वाला। ओके, सो ब्रिज, अगर हमने ब्रिज कॉन्फ़िगर किया यानी दो इंटरफेस को हमने मर्ज कर दिया, यानी पोर्ट A है या फिर पोर्ट 1 2 है, ठीक है, उस दोनों को मर्ज कर दिया, दोनों को स्पीड बढ़ाने के लिए या फिर रिडंडेंसी लाने के लिए, तो उसको हमने ब्रिज किया। तो ब्रिज का इंटरफेस का जो सिंबल होगा, ओके, वो it will look like purple, green, okay, greenish. So we allow सर ब्रिज yes, यानी it is. वन टाइप ऑफ द ईथर चैनल ना? Yes, you can say ether channel, or you can say lag also, both. ओके ओके ओके। Yes, we will वो भी हम कॉन्फ़िगर करेंगे, हम एक फायरवॉल के साथ है ना ब्रिज करेंगे, एंड एक स्विच लेंगे, स्विच पे दोनों कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। ऑलराइट, एंड वी एक लिंक ऐसे हम निकाल देते हैं, एंड विल सी दैट कि हमारा ट्रैफिक ड्रॉप होता है कि नहीं। जनरली नहीं होगा क्योंकि हमने कॉन्फ़िगरेशन हमारा प्रॉपर होगा। अगर नहीं होगा तो फिर हम उसको फिक्स करेंगे। लैब पे तो वर्चुअल है, तो वर्चुअल में ऐसा हो सकता है कि वो थोड़ा मिसबिहेव करे, तो कॉन्फ़िगरेशन आप देखोगे कि एकदम प्रॉपर ही होगी, बट शायद हो सकता है मिसबिहेव करते, उसको कैसे फिक्स करेंगे वो भी देखेंगे। राइट, यस, इट्स पोर्ट इथरनेट चैनल, और एक है LS लैग भी है, जो LSCP प्रोटोकॉल है वो भी सपोर्ट करता है। ये रहा, मैं आ रहा हूँ वहाँ पे। सो ब्रिज like a port channel, so allows two or more interface to use to create transparent layer 2 or layer 3 layer 2 or layer 3 bridge interface for seamless communication between the interface। तो हम ब्रिज करेंगे दो, मीन सोफोस फायर का दो पोर्ट लेंगे। ओके, लेट्स से DMZ है, DMZ जोन है, वहाँ पे हम एक पोर्ट चैनल बनाएंगे, एक लैंड जोन पे भी पोर्ट चैनल बनाएंगे, एंड देखेंगे हाउ इट वर्क्स विद द फायरवॉल। if anyone has any doubt or query, you can stop me in between, raise your hand if I am not unable to hear you। Sorry guys, if I am missing, अगर कोई मुझे inform कर रहा है and I am not listening, just raise your hand also, I will get the notification, okay, and I will stop and I will come back Sure, to you on sure. that।
Okay, everyone. Okay. Now ब्रिज किया हमने, ऑलराइट. नाउ व्हाट इज एलियास? तो एलियास आईपी भी होगा, एन एडिशनल आईपी एड्रेस दैट कैन बी एडेड ऑन इंटरफेस. तो इसका सबसे ज्यादा बड़ा एग्जांपल क्या होगा? लेट्स से आपने आईएसपी से स्टैटिक आईपी लिया, ठीक है, 5-6 आईपी लिए या फिर उससे भी ज्यादा आईपी लिए, नो वरीज. बट लेट्स से 5 आईपी है, तो वो 5 आईपी कहाँ पे कॉन्फ़िगर करोगे? लाइक तो एज अ एलियास कॉन्फ़िगर करोगे. ओके, आपके पास फायरवॉल पे 4 पोर्ट्स ही, ठीक है, एक लैंड जोन है, एक वैन जोन है, एक डीएमजी जोन, एक वाईफाई जोन है, सारे सारे पोर्ट ऑक्यूपाइड है, राइट. और आपने लिया है आईएसपी से 5-6 आईपी परचेज किया हुआ है, ऑलराइट. एंड नाउ यू वांट टू कॉन्फ़िगर दैट ऑल 5 आईपीज ऑन दैट इंटरफेस. तो कैसे करेंगे? एलियास आईपीज से करेंगे. ऑलराइट, इजी है, क्लिक करना ऐड एंड यू कैन ऐड दैट आईपी, विल सी. बट अंडर वी हैव टू अंडरस्टैंड द टर्म्स. ओके, हम ये जो टर्म्स है, वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज alias, bridge, VLAN, lag and red. ओके, इंटरफेस, लॉजिकल इंटरफेस क्या है अभी हम कॉन्फ़िगर भी करेंगे, सो ज़्यादा आइडिया आएगा. नाउ एलियास पता चल गया कि जैसे कि अगर आपको वो नेटवर्क है, ओके, नॉट ओनली आईएसपी, अगर इंट्रानेट भी है, अगर उसके नीचे और एक आईपी आपको कॉन्फ़िगर करना है नेटिंग के लिए, लेट्स से फॉर एग्जांपल, तो आप उसको वहाँ पे एज ए गेटवे कॉन्फ़िगर कर सकते हो, एक एडिशनल आईपी भी कॉन्फ़िगर कर सकते हो. ओके, बट सेम नेटवर्क नहीं कॉन्फ़िगर कर सकते दूसरे इंटरफेस पे. वो सेम इंटरफेस पे आप एलियास आईपी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं. Next is VLAN. So VLAN is everyone know VLAN, तो सेम राउटर पे VLAN कॉन्फ़िगर करते हैं. हमने प्रैक्टिस भी किया है कि राउटर ऑन अ स्टिक फॉर एग्जांपल, तो वैसे ही सोफोस में भी आप कर सकते हो अगेन. सो अगर आप सोफोस एज अ राउटर ऑन स्टिक यूज कर रहे हो, देन यू हैव टू डिफाइन दैट. You can define VLAN on Sophos firewall also, and you can do inter routing and tagging from Sophos firewall. Sophos से ही आप इंटर राउटिंग और करेंगे. तो हम जो लैब होगा ना, उसमें सोफोस पे हम इंटर राउटिंग सोफोस को मैनेज करने के लिए देंगे, और एक हम करेंगे L3 स्विच पे, ऑलराइट, कि L3 से स्विच की तरह विदाउट डूइंग VLAN ऑन दी सोफोस फायरवॉल. उसमें तो मैं सिर्फ या फिर आप राउट्स डाल दो, स्टैटिक राउट्स और डायनेमिक राउट्स डाल दो, तो ऑटोमेटिकली इट विल डू द कम्युनिकेशन बिटवीन योर नेटवर्क्स. या बट वी विल सी ऑल दिस इन एक्शन. हम राउट सोफोस पे करते तो हमें और आइडिया आएगा. फिर हम उसके बाद तो ऑलरेडी आपको कॉन्फ़िगर करना आ गया होगा, देन यू कैन प्ले विद द कॉन्फ़िगरेशन. आप जितना प्ले कर, मींस इफ यू रन द, आप डिलीट करो, you create another scenario, again reconfigure it, do multiple times, तो आपको फिर बैठ ही जाएगा कि कैसे इसको करना है. ओके, नॉट ओनली टू कॉन्फ़िगर बट ट्रबल शूट ऑल्सो लेटर ऑन. नाउ वी हैव लैग. लैग होगा अगेन ग्रुप ऑफ इंटरफेस एक्टिंग एज अ सिंगल कनेक्शन. ब्रिज भी सेम ही है एंड लैग भी, बोथ आर सेम, which provides you as a redundancy or to increase the speed between the two device. और ब्रिज में भी हमें पता है कि ब्रिज यानी हम एक एज अ स्विच यूज कर सकते हैं. यानी लेट से हमारे पास 10 पोर्ट है, ठीक है, उसमें से 5 पोर्ट हमने ब्रिज कर दिया, दैट मीन्स वो जो ब्रिज क्रिएट किया, दैट इज अ स्विच एक्चुअली. ओके, एक टाइप का वो स्विच बन चुका है अब, वो भी फायरवॉल नहीं है, मीन्स दैट इज अ पार्ट ऑफ अ फायरवॉल बट इट इज एक्टिंग एज अ ब्रिज. तो आपने ब्रिज भी कॉन्फ़िगर किया है. ओके, आपने ऑलरेडी गेटवे तो कॉन्फ़िगर किया है, आपने 2-3 इंटरफेस उठा के ब्रिज कर दिया, 2 इंटरफेस लेके लैग कॉन्फ़िगर कर दिया. तो फायरवॉल कौन से मोड में जाएगा? दैट इज इन मिक्स मोड. ओके, दैट इज जाएगा नहीं, बट आई कैन से इट इज कॉल्ड मिक्स मोड. ओके, तो हमने पढ़ा था गेटवे मोड, व्हाट इज गेटवे मोड, ओके, व्हाट इज ब्रिज मोड, व्हाट इज मिक्स मोड. ओके, और एक डिस्कवर मोड भी पढ़ा था जो पोर्ट मिररिंग के लिए था, राइट. तो जो हमारा ब्रिज था, राइट, गेटवे ब्रिज लेट से मिक्स मोड नहीं है, तो जनरली क्या होता है, जो हमारे राउटर्स होते हैं वो जनरली गेटवे मोड पे ही होते हैं, राइट. थर्ड लेयर 3 डिवाइसेस जो आपके राउटर्स हैं, फिर लेयर 3 भी आपका गेटवे मोड में होगा. देन यू हैव L2 द डिवाइसेस. सो यस, इन इफ यू इन जो सोफोस फायरवॉल है उसमें अगर आपने इंटरफेस में दो इंटरफेस है जो लैग कर दिया है फिर ब्रिज भी कर दिया, तो
गेटवे प्लस आपका ब्रिज मोड यानी मिक्स मोड, यानी सारी फंक्शनैलिटी एक ही साथ चल रही, गेटवे भी चल रहा है, ब्रिज भी चल रहा है, एंड यस टुगेदर इट इज कॉल्ड मिक्स मोड ऑन द फायरवॉल। सो लैग कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, या अगर आपका जो सोफोस फायरवॉल का लेट से दो कनेक्शंस, दो पोर्ट आपने यूज किया, ठीक है, और एक स्विच से कनेक्ट किया जो सपोर्ट करता है लैग LSCP, देन यू कैन कॉन्फ़िगर लैग एज वेल। सो हम लैग कॉन्फ़िगर करेंगे, ब्रिज भी देखेंगे। ऑलराइट, नेक्स्ट इज रेड। तो रेड तो सोफोस का ही है। ऑलराइट, सो इट इज प्रोप्राइटरी टाइप, यू कैन यूज टू कनेक्ट सोफोस रिमोट इथरनेट बैक टू सोफोस फायरवॉल। जो सोफोस का डिवाइस कल बताया था मैंने आपको, जो सोफो उसको जब हम कनेक्ट करते हैं तो एक रेड इंटरफेस क्रिएट हो जाएगा यहाँ पे। ओके, इंटरफेस जहाँ पे आपका इंटरनेट कनेक्शन है। सो उसका कॉन्फ़िगरेशन हम देखेंगे। तो जैसे हम कॉन्फ़िगरेशन पे अप्लाई करते तो ये वाला जो इंटरफेस है वो क्रिएट हो जाता है, यानी जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन हम क्रिएट करते हैं, अप्लाई करते हैं, सेव करते हैं, उसके बाद ये इंटरफेसेस आपके क्रिएट होंगे। ऑलराइट, सो we have gone through the interface, और दो इंटरफेस है। ओके, सो yeah, that is tunnel interface. Okay, so tunnel interface IPsec के लिए है, राइट। सो देर आर टनल इंटरफेस। ये टनल इंटरफेस आपका राउट बेस पॉलिसी पे होगा। सो मैं आपको आगे जाके जो फोर्थ मॉड्यूल है उस पे आएगा कि वो IPsec VPN कैसे एस्टेब्लिश करना है बिटवीन हेड ऑफिस एंड ब्रांच ऑफिस। ये यस कहते हैं से रेड जो आपने रेड बताया वो सोफोस का स्विच रहेगा, और कौन सा प्रोटोकॉल पे चलता है ये? सॉरी कहते हैं, कम अगेन। जो रेड रेड स्विच आपने बताया मुझे, रेड स्विच जो है कनेक्ट दिस सोफोस, दिस और वन। हाँ, और सोफोस की स्विच रहेगी या कोई सी भी स्विच चल सकती है? नहीं, ये जो रेड डिवाइस है ना, रिमोट एथरनेट डिवाइस, वो एक पर्टिकुलर एक आप बोल सकते हो कि छोटा सी फायरवॉल है, राइट। इट इज नॉट अ स्विच, आई थिंक। आई एम आई गेटिंग यू करेक्ट? आई डोंट अंडरस्टैंड योर क्वेश्चन। दिस इज Yeah, that's just correct. This is small firewall, not a या switch. not a that is not a switch. Yes, that is Because he a has mentioned the remote Ethernet devices. That's why I thought this is a yeah. switch. No, yeah, but this is not a switch. This is a device like firewall only. Okay, Okay. let's say you have a small office, you have one company, a very small company, and that company has a very small number of user in the remote location. Now how you will secure with the firewall? Sophos से कैसे secure करेंगे? तो आप क्या करो, remote Ethernet device आता है, you have to deploy that between the router, internet router and the switch जो आपके लेट से। ओके, ये सो छोटा सा एक टोपोलॉजी है कि वहाँ पे जो ब्रांच ऑफिस है वहाँ पे लेट से 5 यूजर्स हैं, वहाँ पे एक सिंपल टीपी लिंक है, एंड देन टीपी लिंक से स्विच पे जा रहा है, नॉर्मल स्विच पे, और वो पीसी पे जा रहा है, 2-3 पीसी है वहाँ पे। बट उसको सिक्योर करना है तो कैसे करेंगे? वी कैन नॉट डिप्लॉय अ बिग और स्मॉल फायरवॉल, instead we have a small, very small device called Sophos Ethernet device. You can deploy between, I mean इंटरनेट का जो कनेक्शन है वो स्विच से निकल के और राउटर से निकल के आप डायरेक्ट रेड पे डालो, और राइट, और इसको मैनेज कर सकते। इस ये जो रेड डिवाइस होगा वो कॉन्फ़िगर होगा यहाँ से सोफोस फायरवॉल Sir, ऑटोमेटिकली। हाँ, can you explain a diagram for this, because I did uh, not understand that, sir. okay, just give me, let me go to the browser, let me show the browser. Okay, might we have the images? Okay, it will look like this way. This is a very small one. 1 minute. Okay, then just yeah. It's okay, no problem. Okay, can you speak up? Yes, I saw this one, but how the connectivity will be there? This is my question. I'm sorry, Ketan, now you can speak up, please. Yeah, this is, I understand that's a small device is that, but how the connectivity be? It will be connect to the head office to the branch. So Yeah, we want internet both the side, right? yes, internet is required. We are securing that small network. Okay, so here is the diagram. Can you see? Okay. This is your head office. Okay, let's say you have you have 100 users here, you have 50 users here, but you have very 2-3 users here.
Okay. Or it is not about 2-3 users. Let's say you have 10 users or multiple users as well, but you want to protect it. You want to यहाँ पे भी इंटरनेट तो होगा ही, इंटरनेट तो देना ही है, पर वहाँ पे कोई सिक्योरिटी डिवाइस नहीं है और वी कैन नॉट डिप्लॉय दी सोफोस फायरवॉल देयर. तो क्या कर सकते हो, रेड डिवाइस है ये, तो ये आप वहाँ पे कॉन्फ़िगर करो, सारा ट्रैफिक यहाँ से हम सिक्योर करके भेज सकते हैं. बराबर. In between there is IP site to site tunnel, right? Yes, but it is called a red tunnel here. Red tunnel. Yeah, it is called side to side red tunnel. तो उसका कॉन्फ़िगरेशन भी इजी है. ओके, जस्ट यू टू इसको इंटरनेट से कनेक्ट करना है. ऑलराइट, लेट्स से यहाँ पे ऑलरेडी एक राउटर तो है जहाँ से इंटरनेट तो मिल ही रहा है सबको, बट हमको सिक्योर करना है, राइट? तो क्या करेंगे, इसको हम बीच में रखेंगे, मींस वी विल कनेक्ट दैट इंटरनेट कनेक्शन ऑन द रेड एंड वहां से आगे जाएगा स्विच पे, स्विच से आपके पीसी पे जाएगा. Bharat sir, this cannot be work as a router as well. Sorry, This cannot be work as a router as well. this red device, Yes, yes. it will, yeah, we can bridge and we can route, we can use as a gateway also. So that is called router. Yeah, we can use Okay. that. That is possible. We can We- use as a router as well It's with like the a firewall. small firewall. Yeah, As small. like a small firewall. Yes, yeah. Okay, okay, understood. एंड अगर मैं आपने मॉड्यूल्स तो देखे होंगे, उस पे एक डेडिकेटेड मॉड्यूल है रेड करके, जो मैंने आपको बताया था. उस पे एक आई थिंक इट इज द 9th मॉड्यूल, वी विल स्टडी अबाउट रेड कॉन्फ़िगरेशन. Okay, so if I go to Sophos, let me just show you that device again. So product and firewall. Okay, so you have to connect that internet connection here. Okay, Ketan. Yes, sir. And the traffic will pass from the tunnel then, not from the eyes. जहाँ पे वो इंटरनेट है वहां से ट्रैफिक जा रहा है, राइट? बट जब आप फायरवॉल या आप रेड डिप्लॉय करोगे तो ट्रैफिक जाएगा आपका टनल से, जाएगा सिक्योर होके जाएगा. Okay. Okay, sir. Okay, we will discuss we have dedicated module for this also, so we'll see this in much more detail. It will look like this. This is 60 for a load. You can connect 2 ISPs for load balancing, means that you must have 2 ISPs and 2 tunnels is pe banegi. So one fails, then it will take it over. But I trade 20, I think that is not supported. Only one is supported. So that would be the difference. So we'll understand which model should we use as per the requirement or business needs actually, mainly. Now, Yes, yes, same device in Fortinet also they have it, 40 FE201 with E with the 4G and 5G connectivity. Yes, like same box is saying that. Yeah. Okay, I yeah, got it, sir. I So, got it, Bharat sir. sir, we can also connect a wireless device to take access of wireless devices. or not for the third party, only for Sophos. If you Only let me, for the Sophos will work the wireless as a wireless device in this. yes, but only the Sophos APs. You have to remember that very well, because mainly people misunderstood that the third party APs can be controlled by Sophos. Okay, तो Okay. जो एक बार वो भी देख लेते हैं अभी इसमें है, तो let me just show you that models. सर ये एक्सेस पॉइंट और जो कंट्रोलर जो है कौन सा प्रोटोकॉल पे चलता है? 1 minute, Ketan. Yeah. ओके. Hello. हाँ जी Yes, सर जी, yes. जैसे जैसे सिस्को जो है, सिस्को वायरलेस कंट्रोलर और वायरलेस एक्सेस पॉइंट, दे आर वर्किंग विद द कैप Ketan, प्रोटोकॉल. just give me a moment. Okay. Okay, yeah, Ketan, speak up. से सिस्को के अंदर है सिस्को कंट्रोलर एंड एक्सेस पॉइंट, Mhm. they are working with the CWAP cap protocol.
CWAP protocol, something like that. Okay. So in that one also, what types of protocol they are using this in the so with this? Yeah, okay. So it depends on the model, Ketan. So we have to look into the model. You can see here. Can you see my screen? Yes, I can see your screen. Yes, yeah. Yeah, so you can look into the screen. I think it is supported here. You can use this. Mhm. Okay, No, so what? I'm talking about protocol. This switch protocol in between the controller, because this is for Sophos Firewall as a controller, wireless controller, as well as wireless access point. In between, there is a secure protocol. Is that CWAP protocol or something like that, or different protocol? What types Oh, of protocol they are using? okay, so I don't know about the particular protocol. They have the proprietary or not. Might be they were using Mhm. standard one, Yep. but Mhm. I'll come to that which exact protocol they are using. Generally, these APs are getting integrated with particular type of traffic through Sophos Firewall. We will see that how that APs are automatically getting detected on Sophos Firewall with help of the magic IP they supports. Of course, on the wireless controller, we have not mentioned about that particular protocol, but I will get back to you and confirm which exact protocol is working between this Sophos Firewall and the APs. Okay, sir. No issue, sir. Okay, so generally what happens as a administrator when you use this Sophos APs, okay, these are the models available. If you, I think you can scroll for the bigger one, okay, and small one. It depends on the type of organization, the type of users we are using. Let's say, so whenever you purchase any of these APs, okay, whether it is AP 120 or to any one till 740, the firewall automatically detect the APs and configure rest of the things for you. So it's just you have to plug and play and we are good to go. This is the advantage of Sophos controller and Sophos AP. But yes, of course, let me just confirm that what exactly like Cisco, how Sophos they are getting detected, but generally they are getting detected on the particular traffic called magic IP called 1.1.2.3.4, and yeah, that would be all for APs. So let's go ahead. Sure, sir. Understood this point. Okay. So we will be the classes would be from 6 p.m. to 8 p.m. So we will be always ending the class for time being on 8 p.m. 8 taking, we'll have a lot of time. So let's discuss about two type of interface, and if time permits, then I think I believe that we have to start. I will not able to start the lab today because our time is up right now. Okay, so no worries. Let's continue this last two interface type, that is interface tunnel and the Wi-Fi tunnel. Okay, so this is the icon on the firewall. So when you, yeah, by default, this interface is there on the Sophos firewall. If you don't like, you can delete it if you are not using Sophos AP, but still you will find this icon. So if you want, you can, yes, of course, that is possible to delete, but you, once you click on delete, it will stay as it is. Okay, you require some special command from the advanced cell to delete these tunnels if you want. But mainly the tunnel what is tunnel interface for the IPsec? The tunnel interface are created using a type of IPsec that allows for standard routing to use to send over the VPN. So if you want to send any type of traffic, any type of traffic, then you have to use the tunnel interface. It will act like a GRE tunnel, the same as the GRE tunnel. It is a tunnel interface on the Sophos firewall. When you create when you're working with the Sophos firewall and when you are connecting head office and branch office, always go with the tunnel interface. All right. So in future, if you get any type of requirement changes, you don't have to worry about, or you don't have to down the tunnel. You don't have to take the downtime to move the particular traffic. Okay. So we will understand how we can move particular traffic, voice traffic or application traffic, service-based traffic for particular interface on the firewall. All right, तो ऐसे हम define कर सकते हैं SD-WAN जब हम use करेंगे हम default पहले
जब लैब पे कर रहे हैं तो स्टैटिक करेंगे, देन वी विल गो विद द डायनामिक, उसके बाद एसडी वैन से भी स्टार्ट कर सकते हैं, एसडी वैन करो। बट कभी ऐसा होता है कि sometime there might be the bug where the policies are not working properly, तो कैसे वेरीफाई करेंगे? अगेन वी कैन डू द स्टैटिक, राइट? अगर हमने डायनामिक और स्टैटिक था सबसे पहले तो क्या करते थे कि लेट्स से डायनामिक स्टैटिक से टेस्ट कर लिया, इट इज वर्किंग। फिर हमने किया डायनामिक से, डायनामिक राउटिंग बीजीपी की ओएसपी है, उससे भी कम्युनिकेशन चल रहा है। बट एक टोपोलॉजी पे एक जगह पे हमने ऐसा किया, सीधा हमने डायनामिक चलाया, नहीं चल रहा है, बट स्टैटिक कर रहे तो हो जा रहा है, राइट? सो दीज आर द स्टेप्स, राइट, फॉर टू फिक्स दैट, टू चेक वेदर वेयर इज द इश्यूज। सिमिलरली सोफोस में भी हम ऐसे करेंगे, एसडीएन जब आता है यहाँ पे टनल इंटरफेस पे, तो अगर इट्स वर्किंग इट्स गुड, इफ इट इज नॉट वर्किंग वी विल टेक द स्टेप्स टू ट्रबल शूट, ऑलराइट? जब आप लैब करेंगे आपके सामने ही लैब करूंगा, जो भी होगा ऐसा प्री कॉन्फ़िगर करके कुछ भी नहीं होगा कि मैं उसमें से दिखा रहा हूँ, वहाँ पे आपके सामने ही करूंगा। अगर नहीं चल रहा है देन वी विल सी हाउ वी कैन फिक्स इट। कभी कभी ऐसा होता है कि चल जाता है, या कभी कभी ऐसा होता है नहीं चलेगा, तो नहीं चलेगा उसमें ही ज़्यादा हमें फोकस करना है कि कैसे हमें उसको अप एंड रनिंग करना है। So we have understood the type of interface. Additionally, you can create a wireless interface and IPsec interface. These are the two types that are created as a part of configuring your functionality of the Sophos Firewall. So IPsec VPN and the wireless network use separate zone configurations. Tunnel interface can create use type of IPsec that allows standard routing, which you can use to send over IPsec VPN. तो आप वहाँ पे स्टैटिक भी चला सकते हो, अगर आपको डायनेमिक राउटिंग चलाना है ओवर आईपीसेक, ओके, बीजीपी चलाना है ओवर आईपीसेक, ओएसपीएफ चलाना है, then you can use all the standard routing over the VPN also with the Wi-Fi. So Wi-Fi interface are created when Wi-Fi network are routed traffic back to the Sophos firewall with a separate zone. तो यहाँ पे भी एक जब हम एपी कॉन्फ़िगर करते तो उसको सेपरेट जोन कर दो तो ऑलरेडी वो सेगमेंट हो गया, राइट? आपके गेस्ट यूजर के लिए फॉर एग्जांपल। बट आपको अगर आपके कोई एम्प्लॉयज के लिए अगर आ रहा है देन वी विल सी व्हाट आर द अदर ऑप्शन, लाइक हम उसको ब्रिज कर सकते हैं, जो आपका ब्रिज इंटरफेस है, तो we will bridge that interface with our LAN interface, okay? We'll see that option, okay? Firewall पे सिर्फ option है, हमें select करना है and we are good to go. So we have to select the interface कि हमें एक separate network ही create करना है या फिर कोई LAN से ही जो DHCP है उसी से ही वाईफाई को मिलना चाहिए and so on. So these are the example that I am discussing. We will see in action also. All right, we will discuss about the WAN link manager. All right, तो जितना ISP आपका connected होगा WAN zone पे, you will see this is the global one. Okay, यहाँ पे global settings है आपका, तो यहाँ पे वो applicable रहेगा, ये global setting applicable throughout। अगर आपने कोई special SD-WAN configure नहीं किया, let's say SD-WAN क्या होता है जनरली, लेट्स से आपका वॉइस ट्रैफिक EISP से जाना चाहिए, फिर ये यूजर का ट्रैफिक EISP से जाना चाहिए, फेसबुक का ट्रैफिक EISP से जाना चाहिए, और आपका जो इंट्रानेट का ट्रैफिक आपका जो पोर्टल होता है, राइट, सेल्स फोर्स एंड मे बी 365, वो EISP से जाना चाहिए, वो आप SD-WAN से कर सकते हो। अगर आपने वो डिफाइन नहीं किया है तो क्या होगा, तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे लोड बैलेंस हो जाएगा अगर एक्टिव है तो, ओके? अगर टाइप, अगर यू कैन सी द टाइप हियर, अगर एक्टिवेट किया तो ऑटोमेटिक वो लोड बैलेंस होगा। और एक चीज होता है जैसे कि यहाँ पे आपकी 10 Mbps की स्पीड है, यहाँ पे 30 Mbps की स्पीड है, तो जो आपके दो ISP है, तो मैंने क्या बोला 10 और 30, तो 40 Mbps नहीं हो जाएगा, ठीक है? वो वैसे काम नहीं करेगा, वो ट्रैफिक आपका सिर्फ लोड बैलेंस करेगा ट्रैफिक। यानी अगर आपने लेट्स से यहाँ पे 10 Mbps का स्पीड है, यहाँ पे 30 Mbps का स्पीड है, 10 वेट आपने यहाँ पे 10 दिया, यहाँ पे 30 दिया, यानी 30 पैकेट्स पहले यहाँ से जाएंगे अगर ये एक्टिव है तो। ये तो बैकअप एग्जांपल है, एक्टिव है तो पहले 30 पैकेट्स, ओके, यहाँ से जाएंगे, दूसरे 10 पैकेट यहाँ से जाएंगे, 30 यहाँ से, ओके? इस हिसाब से लोड बैलेंस होगा ट्रैफिक, यानी बीच पे मीन्स आप लोड बैलेंस कर सकते हो, 10 Mbps और 30 Mbps मर्ज नहीं कर सकते आप स्पीड फावल पे। आई डोंट थिंक कोई भी फाइल पे मर्ज कर सकते हैं। if anyone has a good idea you can share with us and you can just share your knowledge, all right, in case you know। but फाइल पे क्या होगा, अगर 20 Mbps है और 10 Mbps है then we cannot merge that IP। yes Ketan?
सर पालो अल्टो के अंदर एक ईसीएम फैसिलिटी है, इक्वल कॉस्ट मल्टी पाथ, ईसीएम। मे बी द गौरव नोज अबाउट दिस। उसके अंदर कोई सा भी स्पीड रहने दो तो दोनों जगह से इंटरनेट चलेगी। इक्वल कॉस्ट मल्टीपाथ, इक्वल कॉस्ट मल्टीपाथ। यानी आपके पास दो आईएसपी है, जैसे कि 10 MPS और 10 MPS, तो अगर मैं स्पीड टेस्ट करूँ तो मुझे 20 MPS में मिलेगा, नहीं राइट? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, दोनों एक्टिव रहेगी। लेकिन एक पैकेट ऐसा इंटरनेट एक एक आईएसपी से भी जाएगा, दूसरा इंटरनेट दूसरी इंटरनेट से भी जाएगी, दोनों आईएसपी से दोनों एक्टिव रहेगी, दोनों इंटरनेट चलेगा उससे। यस, Yes, तो yes, this the फाइव। with the help of load balancing, and this हम्म। is used with the path attribute of the firewall, यस। and like in the routing there is a other things in the SD-WAN also there is a path attribute we need to use. So this will be load balance for the both ISP. ओके, तो आप जो बता रहे हो वो तो सोफोस में भी अवेलेबल है। हाँ ऐसा है। अगर आप जो अभी जो सेम चीज बताए वो तो सोफोस में भी ऑटोमेटिक, ये अगर आप एक्टिविटी रखा हुआ है, ठीक है, 10 10 MBPS है, तो नहीं ऑटोमेटिकली वो हो जाएगा ट्रैफिक लोड बैलेंस। नहीं, 10 हो या कुछ भी हो, 10 हो 5 हो कुछ भी हो। वो तो मैंने सिर्फ हाँ यस, वो मैंने हम्म एग्जांपल हम्म। समझाने के लिए बोला कि लेट्स से यहाँ पे मैंने अगर 10, तो पैकेट्स में वो ऐसे राउट्स करवा सकता हूँ। अगर 1 1 रखा है, अगर 10 10 रखा है, या फिर 30 30 रखा है, ओके, सो 30 पैकेट्स फ्रॉम दिस, 30 पैकेट्स फ्रॉम दिस, बोथ। भरत सर, इसमें भी जैसे मैं चाहूँ कि एक लिंक से मेरा व्हाट्सएप का एप्लीकेशन चले, एक से फेसबुक का, तो ये हो सकता है मीन्स सोफोज में? कर सकते अच्छा हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, वो हम ठीक है आएंगे, सर। SD WAN कॉन्फ़िगर करेंगे ना, तो अच्छा सर वो सर। करेंगे। उसमें आप अब अभी जाके टेस्ट कर सकते हो। SD WAN राउटिंग में SD WAN क्लिक करो, वहाँ पे एप्लीकेशन करके होगा, सर, ठीक है। पॉलिसी बेस्ड राउटिंग में यूज होता है, सेंट्रलाइज लोकलाइज पॉलिसी आर यूज एंड AAR पॉलिसी इज आल्सो देयर, हम्म, एंड देयर डिफरेंट डिफरेंट पॉलिसी आर इन द SD-WAN, सिस्को SD-WAN। ओके, तो सिमिलरली जो आपने वहाँ पे कॉन्फ़िगर के यहाँ पे ट्राई करना है आपको, और मुझे भी आप बता सकते हो कि सेम चीज़ें यहाँ पे भी अचीव कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, चल रहा है नहीं चल रहा है, तो आई कैन हेल्प यू आउट। Sure, sir. There are controller in this SD. We are using the controller for Sophos as well for the SD-WAN technology when we will use in the Sophos firewall. वी डू हैव कंट्रोलर दैट इज कॉल्ड सोफोस सेंट्रल, हाँ वहाँ से भी कर सकते हैं, बट वो पर्टिकुलर अलग से मैं वो कोर्स में आऊंगा, बट यहाँ से हम सोफोस से ही कंट्रोल करेंगे। Sure, sir. Sure. Okay. क्लाउड वाला हम डिस्कस करेंगे, बट दैट वुड बी Mhm. आफ्टर 12th मॉड्यूल, ऑलराइट। Okay. Okay. Understood. वो कोर्स का पार्ट नहीं, बट डेफिनेटली हम वो देख लेंगे, क्योंकि शायद आप तो लाइव सिनेरियो में काम करते हो, तो मैं आपको अलग से उसको Yes. गाइड कर दूंगा। और ये सब कोर्स, ये एक्चुअली जैसे बताया केतन ने, अलग अलग लेवल के कोर्सेज होते हैं, राइट? सो दिस इज द फर्स्ट लेवल, ओके, फर्स्ट Yeah. Yeah. लेवल, सेकंड Sure. लेवल। तो सेकंड लेवल का भी एक कोर्स में उसको बहुत डिटेल में मैं आपको बता दूंगा कि इसको आपको क्लाउड से भी कैसे इसको मैनेज कर सकते हैं, एस डिवेंट्स। Sure, sir. ओके, ऑलराइट। सो ट्रैफिक लोड बैलेंस कर सकते हैं, जैसे ये ऑफ कोर्स केतन ने शेयर किया, थैंक्स फॉर योर इंफॉर्मेशन। बट सिमिलरली जो भी फंक्शनैलिटीज, जो बेसिक फंक्शनैलिटीज अगर आपको दूसरे फायरवॉल में दिखता है, वो सोफोस फायरवॉल डेफिनेटली कर देगा। वेट के बारे में हम, सॉरी आई माइट get make someone confused, but let's say 1 1, then traffic will get load balance between these two ISPs, okay। अगर जो लोगों ने अभी तक फाइवल पे काम नहीं किया है, उसको सिर्फ इतना याद रखना है कि अगर आपके पास दो आईएसपीज है, अलग अलग स्पीड है, ओके, 10 Mbps 10 Mbps, अगर आप स्पीड टेस्ट अप करते हैं, राइट, तब आपको 20 Mbps नहीं दिखेगा, ओके। ये आपको याद रखना है। कोई सी भी, आई थिंक कोई भी फाइल पे ऐसा नहीं होगा 20 टोटल दिखेगा, टोटल नहीं कर सकते इसको, यानी मर्ज नहीं कर सकते दो आईएसपी का स्पीड, दैट इज फॉर श्योर, ओके। वी कैन जस्ट लोड बैलेंस, वी कैन राउट, लाइक जैसे अभी बताया, आईपी से अगर मैं, मेरा व्हाट्सएप है, फेसबुक है, ओके, तो मेरा वो 10 Mbps वाली आईएसपी से जाने दो ट्रैफिक, और जो मेरा जो ऑफिस का ट्रैफिक है, जैसे सेल्स फोर्स, जितनी भी क्लाउड एप्लीकेशंस होती है जिसपे ऑफिस, तो उसका अलग से डेडिकेटेड से भेज दो, ऑलराइट, सो इट विल नॉट फेस एन इशू। यस यस केतन, एनीथिंग? नो सर, थैंक यू। ऑलराइट, सो व्हाट विल डू, आज के लिए हम इतना रखते हैं, एंड टुमारो
कल लैब करेंगे, ऑलराइट, whatever we have studied now till here, WAN link manager, ऑलराइट। फिर हम देखेंगे राउटिंग वाला, देखेंगे कैसे राउटिंग प्रेसिडेंस होता है, जैसे कि टॉप टू बॉटम चेक होता है, स्टैटिक राउट होता है, देन इट विल लुक फॉर राउट्स, देखेगा कि जब डेस्टिन होता है, जो कि डेस्टिनेशन जब हम जाते हैं, ओके लेट्स से मुझे हेड ऑफिस जाना है या फिर मुझे जाना है गूगल, ओके या फिर मुझे ब्रांच ऑफिस जाना है, सो इट विल लुक इनटू द टेबल कौन सा मैच हो रहा है Yes, जो, this is like sir hub to hub and hub to spoke, spoke Spoke. to spoke. यस, Sir, सो could you go on the profile tab so I can just take a screenshot and question with the Palo Alto, sir? which one? Profile yours, like yes, this one profiles. I'm Hmm? taking a screenshot. I need to check these features are available or not in the Palo Alto. Is available. No, every No, no, firewall I has. think there is something not available because bandwidth restriction is there, access time. I don't know actually. Hello. Yes, Bharat sir. Yeah, so yeah, please yes, you have. I will share this PPT to you, so don't worry. Yeah, yeah, sure, sir, sure, sure. So you don't have to take this snapshot. Instead, you can use the PPT. Let me share it right away so that everyone can has the PPT. Okay, I will share you for the first module as of now. All right, Yeah, yeah, and I sure, will sir. share all the notes one by one as we Sure, complete the sir, module. sure. Hello. Sure, sir. Understood. Okay. Let me just. Okay, so we have 4 minutes to go, but let me check if I have the access to the firewall. Okay, anyone has any doubt? Rahul, Ritesh. Okay. Okay, so no worries. We will see the default. जो हमने अभी बोले, I think demo.sophos.com. Let me access this if I can. Okay, so Gaurav, you can go to the firewall. Okay, Yes. demo वाला लिख लो, ये demo user and password भी मैं send कर देता हूँ. Yeah, yeah, So sure, sir. if you go to here, it is okay. Profile. Profile. Okay, okay, understood. 1 minute. 1 minute. Gaurav, just give a minute. Sure. Yeah, speak up. Sure, sir. You can send Gaurav. me so I can access the same. I can understand the same. Yeah, I'm sharing this link. Okay, you click on the profile here. Okay. Okay, so these are the policies. अभी अब जो हमने पढ़ा है मैंने वही है, देखो यहाँ पे schedule, access time, surfing time, all right. तो आप ये डाल सकते हो. Sure, sir. Sure. तो आप ये डिफॉल्ट पॉलिसीज है जो आती है. यू कैन क्रिएट योर ओन. सो ट्राई दिस लिंक, और आप लैब पे भी ट्राई कर सकते हो. आप अगर सोफोस इंस्टॉल किए लैपटॉप पे देन इट इज गुड, नहीं किया तो नो वरीज में भी नेक्स्ट Sir, कल how much device and like how much RAM and CPU core is needed for Sophos Firewall? 4 GB of RAM is required minimum. 4 GB, so it's a 8 GB of Yes, you can. it's my Yeah, you and can the install. core is the i3 and there are 4 logic virtual core and two is the hard drive core. Okay, so tomorrow what we'll do? Today हमने थियोरी आज किया, राइट? तो हम करेंगे प्रैक्टिकल. ठीक Yes, है, sure, आज sir. हमने थियोरी किया, कल हम पूरा प्रैक्टिकल ही करेंगे. तो Sure, sir, sure. कल मैं ना सबको लैपटॉप पे एटलीस्ट इंस्टॉल कर देता हूँ. तो क्या है कि आपको एटलीस्ट सब जगह पे नेविगेट कर सकते हो, राइट? जो हम नेविगेशन सीख रहे हैं अभी. Sure, sir, sure. ओके, लिंक मैंने आपको भेजा हुआ है. मैं यूजर नेम है डेमो और पासवर्ड है डेमो xg @dmo0 यूजर. ठीक है, ये पासवर्ड है. ओके, Okay, sir. Okay, okay. डिड यू गेट द लिंक एंड द यूजर नेम पासवर्ड? Yes, yes, sir. I got it. ओके, सबको मिल जाएगा. ओके, सेव दिस लिंक.
श्योर सर, श्योर। ओके, और मैं है ना और एक चीज शेयर कर देता हूँ आपको। ऑलराइट, सो नो वरीज, कल शेयर कर देता हूँ क्योंकि दिस सेशन विल